I'm never. Board never. पीछे से आओ, पीछे से आ जाओ, उधर से, वहाँ से आ जाओ, वहाँ से। पीछे थोड़ा करना। हाँ पीछे ये थोड़ा पीछे हो जाओ ना। इमा के कैमरा से बात करके कैमरा से थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे बच्चे बाहर वाह हाँ पास Humi pak thoda open. You get your ban. हाँ. Assalamu alaikum and good morning everyone. With immense pride and joy, we welcome you all to the grand inauguration ceremony of BPL 2025. Before moving forward, all are aware that few months back we lost our two potential cricketers in a car accident, Jasif Hassan and Irfan Mir. In their beloved memory, we will observe a 1 minute silent prayer. Thank you. Over the years, BPL has grown in
Huge round of applause, everyone. Open now. Thank you so much, everyone, for joining us here. I would like to request. So I would like to thank the organizers and I would like to thank them for selecting me as the chief guest. So all the best to बाकी चीज़ें, ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है इससे हमारी यूथ में वो जज्बा पैदा होता है, जीतने का जज्बा, हारने का जज्बा, और हमारी यूथ सही डायरेक्शन पे जाती है. आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट, लेकिन नहीं मिलता मुझे, बट आई कीप ट्रैक ऑफ ऑल द सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे मैचेस कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं, क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और स्पिरिट के साथ खेलो. जीत हार तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम. जो जीते गुड लक टू देम, जो हार तो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. यार अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. यार एक दो चीज़ें मैं कहूँगा, खासकर प्लेयर्स को और जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, प्लीज़ एक डेकोरम के साथ मैच खेलें. जितने भी आपको यंगस्टर देख रहे हैं वो आपको ना एज ए इंस्पिरेशन लें. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू आर ऑल द ग्राउंड आर इन CCTV सर्विलांस. कोई भी बंदा अंदर जाएगा मैच, मतलब ना जैसे इंटरप्शन होता है मैच में, तो प्लीज़ हमें मजबूर ना करें, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे. क्योंकि सारा ग्राउंड CCTV सर्विलांस में हमने लगाया है. सारे ग्राउंड में एक एक बंदा वो कैच कर सकता है. प्लीज़ गेम खेलें, स्पिरिट के साथ खेलें और डिसिप्लिन में खेलें. प्लीज़, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, everyone, for joining us. Please take your seats, or please. अब ग्राउंड के अंदर मौजूद ना रहे, प्लीज जल्दी से जल्दी आप ग्राउंड खाली कीजिए ताकि मैच जो है वो जल्दी स्टार्ट हो. प्लीज बाहर चले जाइए. गेम कुछ समय में ही शुरू होने वाला है. जो भी लोग ग्राउंड में प्रेजेंट हैं, प्लीज अपने अपने स्टैंड्स पे चले जाइए. इट्स टाइम फॉर टॉस. इसके बाद कुछ ही टाइम में जो है गेम स्टार्ट होने वाला है.
एक सेकेंड सर. Welcome, Bijbehara. It is BPL time here at Nulundrusu Cricket Stadium, Bijbehara. It's BPL 5 TCI Max presenting this time, and it is toss time for the inaugural match between Elegant Strikers and Sultan Warriors. I got the two captains, I got the match referee, Mr. Shafi Rasool. It's time for the flick of the coin, and Ahmed Bade will spin it. Tails is the call, and it has come out as tails. So the toss has been won by the captain of Sultan Warriors. What are you going to do? बॉलिंग ही करेंगे पहले. कोई खास रीजन है बॉलिंग करने का? What do you make of the surface here? It's a fresh surface and it's a fresh start. सिंपली खेलो यहाँ पे एक हिसाब से होम ग्राउंड है तो अच्छा टारगेट सेट करके इनको चेज करने के लिए लाएंगे. What's the team combination for today? बाहर के 3 हैं हमारे और बाकी अपनी टीम है जो सेम. Sultan Warriors coming up with a lean patch as well as winning a tournament in the previous days. What's your preparation for this time, for this year's iconic BPL? नॉर्मली इस टूर्नामेंट का तो वैसे भी इंतजार रहता है. बाकी नॉर्मली खेलने आते हैं, जीतने आते हैं. सब तो जीत नहीं सकते लेकिन ट्राई करनी है अपनी. All the best, go well into the match. Now the captain of Elegant Strikers, Mr. Ahmed Bande, the toss didn't go your way, and now you have to just bat first here on a fresh pitch. What do you make of the surface first up? We were anyway going to bat first, even if we had won the toss, so it's a good start for us. BPL brings the new vibe, it brings new energy. What are your preparations? Because you have joined a new team, as I have the knowledge of BPL. You're playing with Bijbehara Sports the last time around, and you're leading the side as well. So this gives you an opportunity to lead the side, a young pack. What are your preparations for this time, for this year's BPL? See, BPL is one of the best tournaments we have in Kashmir, so preparations are already there from start. And let's see how the matches go and how the situation arises. We'll act accordingly. And what is your team combination for today? We are playing 2 outstation players. Rest locals are playing. All the best for the match. Go well into the match. The news from the centre is that the toss has gone to the kitty of Sultan Warriors Baramulla, and they have decided to bowl first.
Hello and a warm welcome and a very good afternoon to all the viewers who are watching us live from State Sports Live and BPL official page, the official Facebook page, as well as the official YouTube channel of Bijbehara Premier League. It's game number 1 of BPL 5 presented by TCI Max, and I got the two openers on your screens, the two openers from Sultan Warriors Baramulla, and the two umpires, umpire Javed Daryal and Shoaib. They are going to officiate this inaugural game of BPL Edition 5 presented by TCI Max. The toss, of course, was won by Sultan Warriors Baramulla. And there was a slight confusion there from their captain, and that was rectified later on, and he decided to bat first. Elegant strikers in a customary huddle. To the right of umpire Javed Daryal, and all in readiness for BPL Edition 5 to get kick-started. And this year's BPL will have 12 teams competing for the glory, and this tournament will be recognized for two beloved heroes of this soil, Jasif Hassan and Irfan, the two promising cricketers who got killed in a mishap, in an accident. Jasif Hassan, one of the promising cricketers from one of the famous names of this soil, and Irfan as well. So this year's BPL will be in their memory. Bijbehara Premier League presented by TCI Max, and Bijbehara Cricket Association has done wonders this year. As you can have a look on the iconic venue once again, the Nilandrusu Cricket Stadium, Bijbehara. And the crowd is in numbers here to witness their heroes and witness BPL, which has got its own aura, which has got its own vibe and own electric atmosphere. So everything is in readiness. We are a couple of minutes away from the start of the game. Elegant strikers, the fielders, they have come onto the field. Everything is getting settled here. Javed Daryal will be the standing umpire, and Mr. Shoaib will be the square leg umpire for the first half. OS, who is from UP, one of those outside players. Any team can have 3 of them, and he's one of them. He's opening the batting along with Wasim Kachru, the wicketkeeper batsman of Sultan Warriors.
And Nasir Rasool will start the proceedings from the far end of the ground. Wicket keeper and a slip. Ball number 1 of BPL 5. It's down the leg side, and first runs of BPL edition 5 as well, coming in the form of leg byes. Sultan Warriors are underway. Sultan Warriors Baramulla, strong side, coming up with a reputation, having some dashers at the top of the order. You can use those 6 overs of the power play restrictions and score as many runs as possible. And then they have got some consolidators as well, and then the late order finishers. A perfect combination for nowadays modern cricket. Wasim Kachru is on strike. Strokes it straight to the fielder. But good communication between the two batters, running through for a single. The ball had gone straight to the fielder on the offside. Munib Munaf, who's fielding in the covers. Ahmed Bande captaining the side this year. Elegant strikers. 2 have gone with a combination that looks threatening. They might not be as strong on paper, but when competing in the middle, they give a very tough time to their opposition. The fielding being adjusted. There is a catching cover. Munib Munaf, as the batsman OS would like to drive on the up, and Munib Munaf is there. Next delivery, struck on the pad, shout for LBW, but more of conviction, more of enthusiasm than conviction there, as the ball was missing the leg stump. Umpire Javed Daryal is a seasoned campaigner. Umpire Shoaib, who has been there consistently in the previous 4 editions of Bijbehara Premier League. And this year they have added Mr. Javed Daryal, one of the promising names in umpiring arena, to this year's BPL as well. The outfield is lush green. It's a fast outfield, as Nasir Rasool. This one has been launched. This is in the air. Should be the first wicket. And it has been put down, but what an effort by the fielder coming from mid-on. Had that catch been taken, that would have been an absolute specky in the field. Wasim Kachru, was the batsman, was trying to launch it over the mid-on fielder's head. That ball almost gripping in the surface. So early signs of the pitch. And the ball is coming slower. It will not be a hit through the line pitch. The batsman will have to work for the runs first up, as we have seen in the previous editions of BPL as well. And the ball stops. It does not come onto the bat. Once again, good delivery. Knocked away onto the offside, but not for runs. Nasir Rasool has bowled well. It's a good start. The pitch, as we walk down there, it has been well watered, rolled properly. There were a couple of patches having a bit of grass, but that grass has been rolled off and dead. The ball might not come onto the bat as the batsman would want the ball to come onto the bat for the first 6 overs. Nasir Rasool once again glided away onto the offside. Should they come back for 2? They are rushing back. That's good running between the stumps. Good cricket all around. Getting a couple of runs to close the first over. And after the completion of over number 1, Sultan Warriors Baramulla winning the toss and batting a 5 for none. Wasim Kachru and OS are the batsmen to start the proceedings. Crowd in numbers here at Bijbehara, the Nilendrusu Cricket Stadium.
And we have got lots of arrangements for the crowd who have come in numbers here to witness an electric game of cricket between elegant strikers Srinagar and Sultan Warriors Baramulla. Start of over number 2, and it will be from the media centre end. Saqib will be bowling over number 2. On strike will be Wasim Kachru. Owais is one of those batters who would like to play strokes, use the pace of the batters and play big shots, use the fielding restrictions first up. He's on strike. Wasim Kachru is at the non-striker's end. The only difference between these two openers is the height. Saqib. That's a good delivery. Beating the batsman who was trying to play on the up. And another sign of that ball remaining low on that occasion. The batsman was trying to just hop onto his feet and play it on the up and find the gap. Was nowhere close to that ball. It's a dot ball to start over number 1 by Saqib. The score stays at 5 for none. Next delivery, he has castled him. That is an absolute jaffa. On a length, slightly coming in. And the batsman had absolutely no answers to that. As we have a look on the screens as well. That was an absolute peach from Saqib. Bowled on a length. The batsman skipping back onto the back foot. Had absolutely no chance. So, wicket early in the piece, and the dangerous OS has gone back, and elegant strikers strike in their second over. They have drawn the first blood, and Sultan Warriors Baramulla have lost their first on 5. Elegant strikers right on top in over number 2. This year's BPL will have some changes in the team lineups. I was landed on a perfect seam, the ball nipping, coming in and castling the batsman. So I was talking about the changes made that have to be made in the lineups of all the teams participating in this year's BPL. There will be 1 under-19 player representing each team. And each team is going to have 3 outside players representing them as well. Saqib, he is that under-19 player who has struck earlier with his ball number 2 of his quota. And the new man in is Mr. Reliable, Asim Bashir. Asim Bashir and Wasim Kachru used to open the innings previously. But this time around they had made a change that didn't work. Saqib. Good delivery, well played. First half, first runs. Shy at the non-strikers end, but Wasim Kachru and Asim Bashir, the understanding that they have over the years playing together. Good communication they ran through for a quick single. So Asim Bashir is underway. One of those players, one of those batters who can change the complexion of the game. And BPL Edition 4 saw him rising to a height where he got the Man of the Series award. That will be on the back of his mind. Paul hesitantly played, almost spooning it back to Saqib, who's running through in his follow-through, but no damage done. Score stays at 6 for the loss of 1 wicket. The 2 umpires, experienced umpires, having a wonderful experience of umpiring in BPL, mid-off and mid-on, or inside the ring. Comes out of the crease and finds the gap. That is a brilliant shot. Coming forward, he knew that there was no fielder backing up on the offside, bisecting the gap between extra cover and cover, and getting up the first boundary. Wasim Kachru once again tried to land it on the seam, but Wasim Kachru was ready. Pouncing onto that
making some room and getting the first boundary for his team to take his team into the double figures with a ball to come in the second over. No change in the fielding. The fielding is going to stay the same. Saqib, there was nothing wrong with that delivery. But Wasim Kachru creating his own space and getting that boundary out of nowhere. Square there's a fine leg inside the ring, mid-wicket, and there is a mid-on inside the ring. Ball worked away straight to the fielder who misfields, but that's not going to cost any run. It's the end of over number 2. Sultan Warriors Baramulla losing their first wicket in the second over, a 10 for the loss of 1 wicket. And to continue the commentary for his stint, I hand the mic over to my friend Zubair Ahmed. बहुत शुक्रिया अरशद भाई. बहुत ही ज़बरदस्त मैच हो रहा है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बीच में. हालांकि 10 रन ज़रूर बोर्ड पे लगे हैं. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट मिला है एलिगेंट स्ट्राइकर्स को. आसिम बशीर और वसीम, ये दोनों अगर खेल जाते हैं पूरा पावर प्ले तो एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं अपनी टीम को. आसिम, हम जानते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है और किस लेवल के खिलाड़ी है वो. यहाँ से अगर वो पावर प्ले पूरा खेल जाते हैं तो कम से कम 40-50 रन तो बना सकते हैं पावर प्ले में. नासिर रसूल कंटिन्यू करते हुए अपना दूसरा ओवर. पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है इस गेम में. जितने रन्स आप पावर प्ले में बटोर सकते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है. लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको विकेट नहीं खोनी है. आप पहले 1 विकेट खो चुके हो, आप बैकफुट पे नहीं आना चाहते. आसिम बशीर दूसरी गेंद का सामना करेंगे नासिर रसूल. क्या वो बड़ा शॉट आने वाला है? अब गेंद थोड़ी सी फंस के आ रही है. उस पर बिल्कुल थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. आसिम बशीर अभी तक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. हालांकि वसीम जो है 7 रन बना चुके हैं. स्टेप आउट किया, बड़ा शॉट, हवा में गेंद फील्डर से बहुत दूर है. कहां गई है? 1 बाउंस और द फैंस फॉर अ बाउंड्री. साइंस ऑफ एग्रेशन फ्रॉम वसीम. I beg your pardon, it was Asim. There is some slight problem in scorecard. देखिए आसिम को अब ज्यादा देर तक वो जो है चुप नहीं रख सकते हैं. जब भी आप वो लूज डिलीवरीज डालेंगे तो बिल्कुल आसिम छोड़ने वाले हैं नहीं. ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा लेंथ को अपनी तरफ खींचा है. नासिर रसूल बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है और ये विकेट ढूंढ रहे हैं. एक और विकेट अगर यहाँ पे मिल जाती है सुल्तान की तो बिल्कुल डेफिनेटली वो बैकफुट पे आ जाएंगे. लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी है वसीम और आसिम, वो आपको आसानी से वो मौके देने वाले हैं नहीं. Asim Bashir facing another delivery of Nasir. Slower again, slower bouncer I must say. And it's 1 for the over. Call from the umpire. This match is very electrifying. The crowd is in numbers and they are enjoying every bit of it. Definitely this match is going to rock. 10 runs on the board. क्रिस्प शॉट. क्या पीछे खिलाड़ी मौजूद है? डीप में खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद. 1 ही रन मिलेगा. हालांकि शॉट बहुत अच्छा था लेकिन गैप को ढूंढ नहीं पाए. एक और सिंगल यहां पे मिलता हुआ आसिम को.
after the completion of 3 overs, Sultan Warriors Baramulla 15 for the loss of 1 wicket. And I would like to know some inputs from Irshad Bhai. Saqib is back into the attack. Asim on strike. That's a leading edge, but falls short from the fielder. I was talking with Irshad Bhai, knowing the importance of this game. This is the first game of BPL 2025. How important is this game for both the teams who are playing this match? Well, it's an important game because the team who's starting BPL has got a new, different vibe and aura. And if you're starting on a winning note, meanwhile, here is Saqib with the next delivery. Once again, trying to go for an expensive shot. Wicketkeeper is up to the stumps. Since Asim Bashir likes to walk down and shimmy down at the bowler, that's a good ploy against Asim Bashir. They're trying to get him early in the piece. And if they are able to nab him early, Sultan Warriors will be in a lot of problems. 15 for 1 in the 4th over. And I was talking about the start that every team wants. Next delivery. Turns it away onto the leg side. The ball might not have come from the meat of that blade, since the ball is stopping. And they are bowling into the pitch. And that is taking the sting of that ball. And the batsmen come back. And the batsmen go through for a single. Wasim Kachru is now on strike. So every team would like to get a start, get a win, and come up with a win and go through into the tournament to beat other teams, because this tournament is full of quality teams who have quality players from outside and from the state as well. And BPL, the pitches here, all the 3 pitches that have been laid out, they are perfectly rolled, they're perfectly watered, and Mr. Shafi Rasool and his team, they have done an exceeding job of getting these pitches prepared well in time for this year's BPL. And we have seen these pitches helping both the bowlers as well as the batters. That is the better part of this. And here's Saqib once more. This time, that is stand and deliver stuff from Wasim Kachru. He might be a short-statured guy, but when he hits them, they stay a hit. Over extra cover for the first 6 of this year's BPL. That was a brilliant shot. Giving himself room once again. And smack out of the middle. Holding the pose. Thank you very much. And dispatching it into the crowd for a 6. Next delivery. Onto the stumps. Worked away nicely. Wasim Kachru has got eagle's eye. Watches the ball closely, plays late, and that's the hallmark of his batting. Single to finish over number 4 rather, Sultan Warriors Baramulla. 23 for 1, winning the toss and deciding to bat first. Might not be a good toss to win, because the ball is not coming onto the bat properly. The batsman, top of the order, they might find themselves struggling for that stroke making for which they are known. But it will get better as the game progresses. Asim Bashir, Wasim Kachru, they know how to build in innings and then how to take that attack to the opposition. (23 for 1) after 4, close to 6 runs and over. Wasim Kachru is in double figures with the help of a boundary and a 6. And Asim Bashir is yet to hit his straps. He's playing less than run a ball, 7 of 10. And there is a bowling change. And Vaibhav has come on to bowl.
Left arm spin early in the piece. Good delivery on the stumps. And we have seen captains resorting to left arm spinner against the right-handers because the ball is spun away from the right-handers. So the slip comes into play and there is that slip fielder. Vaibhav once more. This time thrashes it up the back foot. No need to run for that. Save your legs. That's another crisp boundary from the bat of Wasim Kachru. On a length, Wasim Kachru rocks back onto the stumps and plays it beautifully, using the crease well and getting it out of that middle of his bat to earn him boundary number 2 and take Sultan Warriors Baramulla to 27 for 1 in 4.2 overs. There is a wideish long off on the boundary. There is a fielder on the deep mid-wicket boundary for the left-arm spinner. Once again, this time he has launched it up and over, couple of bounces, and that is back-to-back boundaries from the bat of Wasim Kachru. Don't bowl there to Wasim Kachru. You bowl there, he will hit you all day long. Has the captain missed a trick here by bowling left-arm spinner earlier on in the innings? When the fast bowlers, the seamers were getting it right, the batters weren't able to score freely. With the introduction of spin, and Wasim Kachru has hit his straps already. 22 of 12. He's hitting them at more than 200. This time a good delivery. Taking the pace off. Slight variation. And that's a dot ball. 31 for 1 in the 5th over. Wasim Kachru has to be very careful. He's trying to give himself room. Once again, he gives that room in the air. But it was one bounce back to the bowler for no runs. The bowler cramped him for room on that occasion. That's a good comeback after being hit for 2 boundaries. Bowling 2 dot balls. Next ball. This time he turns it up the hips down towards the deepish mid-wicket. The batsman will pick up a single to close over number 5. So 5 overs done. Sultan Warriors Baramulla are 32 for the loss of 1 wicket. They're scoring at a shade above 6 runs an over. And to have commentary as per your request in Hindi. We have got all the bases covered. And I have got my friend Zahid in the commentary box. Welcome you to this year's BPL. It's 32 for 1. धन्यवाद आपका इरशाद भाई और सभी दर्शकों का स्वागत बिज बिहारा प्रीमियर लीग क्रिकेट का महासंग्राम कश्मीर वैली का ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का और इनॉग्रल मुकाबला पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता का सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर आमने सामने और अभी तक का परिणाम 5 ओवर में सुल्तान मात्र 32 पर और 1 बल्लेबाज ओवैस जिनको मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सीधे मंगवाया था आज वो कुछ खासा प्रहार कर नहीं पाए और मात्र 2 रन्स बनाकर वो आउट हो चुके हैं और इस बीच वसीम काचरू एक बेहतरीन प्रदर्शन 15 गेंदें 23 आसिम उनका अच्छा साथ दे रहे गेंदबाजी में साकिब को उनके तीसरे ओवर के लिए लाया गया है ओवर द विकेट इस बार फिर से इनसाइड आउट जाने की कोशिश गेंद कवर्स के ऊपर जा रही है हालांकि वहां फील्डर से थोड़ी दूर जब तक वो वाइडिश लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मुनीब मुनाफ जब तक पहुंच जाते बल्लेबाज दौड़कर 2 रन्स लेने में कामयाब रहे और इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 34 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय आज नदीम डार ने लिया था टीम के कप्तान सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के हालांकि आज जो 3 ओवरसीज खिलाड़ी टीम का हिस्सा है समर जसमीत और ओवैस टीम लाइनअप का हिस्सा हैं और काफी तगड़ा जो प्लेइंग 11 आज हमने देखा है सुल्तान वॉरियर्स का साकिब और विकेट अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से और ठीक हमारे कॉम बॉक्स के सामने गेंद को डिपॉजिट करने में कामयाब और वसीम काचरू के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का पावर प्ले के अंदर विस्फोटक अंदाज की बल्लेबाजी करना
इनका स्वाभाविक खेल रहता है और अभी तक थोड़ा खामोश रखा गया था, लेकिन इस बार उनके रडार में जब गेंद आई, सीधे आई, वो बिल्कुल उड़ती हुई तितली की तरह। इस बार फिर से ड्राइव कर दिया है, कवर और पॉइंट के बीच में से उस और खिलाड़ी नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक और कमाल का शॉट, और साकिब को इस ओवर में आड़े हाथों ले रहे हैं। पहले सम्मान दिया था शुरुआत में वसीम काचरू ने, लेकिन अब जाकर उनके बिल्कुल रडार में जो गेंदबाजी हो रही है, और देखिए तिरछे बल्ले से हर स्ट्रोक, जानते हैं कहीं ना कहीं वो जो पावर प्ले का उनको यहां से फायदा लेना है। जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस इस समय जारी हैं और पॉइंट कवर उस दिशा में कोई खिलाड़ी बाहर है नहीं। साकिब इस बार भी जगह बनाने की कोशिश, थोड़े से चकमा खा बैठे, काफी पीछे हटे थे, इस बार भी इनसाइड आउट जाने की कोशिश, लेकिन यहां थोड़ी सी चतुराई दिखाई गेंदबाज ने, और इस प्रकार से स्कोर कार्ड रुका हुआ 44 पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 44, 1 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। और वो प्लेइंग 11 जरूर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों टीम्स का। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए आज कप्तान नदीम डार, वसीम काचरू, आसिम बशीर, जोहूर जोलो, उवैस चौधरी, जसमीत, सलमान। और स्टंप आउट का यहां पे रिव्यू मांगा है स्केलिंग अंपायर जावेद साहब ने, और यहां रिप्लेस में हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बिल्कुल उस चीज को देखती हुई स्टंप आउट की जो अपील हुई थी उसको रिप्लेस में यहां देखा जा रहा है, और मेरे ख्याल से बचेंगे यहां पर बल्लेबाज, सुरक्षित है वो क्रीज के अंदर, और नॉट आउट का यहां से निर्णय आता हुआ, और सुरक्षित वसीम काचरू। हालांकि पहले वो पैर थोड़ा सा हवा में जरूर था, लेकिन उसके बाद जल्दी से उन्होंने वो अपने पैर को जल्दी से लैंड कर दिया था, और इस तरीके से, हालांकि एक चतुराई रहती है गेंदबाजों की, थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश इस बार वसीम काचरू को की थी, और ऐसे में वो सुरक्षित क्रीज में रहेंगे। सिग्नल जा चुका है, और 44 पर 1 विकेट। पारी का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। इरशाद भाई आपसे जानना चाहेंगे जरूर, यहाँ पे वो जो अर्ली विकेट जिसके कारण अभी तक रन्स उस प्रकार से नहीं बन रहे, और रनों की जो बौछार सुल्तान वॉरियर्स के ओपनर्स करते हैं अमूमन हमने देखा है, लेकिन आज उस तरीके से पहले 3 या 4 ओवर्स में वो बरसात, वो रनों की गति नहीं दिखी है। Probably a new combination top of the order, because when Wasim Kachru and Asim Bashir would come, they would take bowlers for granted and score runs at a brisk pace. But then, once they change the combination, it takes time to settle in. And that's why, and probably the second reason being, the ball was doing too much in the first couple of overs because of that moisture in the surface. Here is Saqib once more. This time, he has come out with that scoop of his own. That is a brilliant shot. You can't set field for that as a captain. It is a headache for you as a captain. And that is another boundary for Wasim Kachru. He is going in a blaze. Wasim Kachru, 39 of 20. And Sultan Warriors Baramulla have gone up to 48 for 1. And they knew that the first overs, they will just consolidate by rotating the strike in 1s and 2s. And then the firepower will come and compensate. The next ball. This time he was trying to go over extra. Saqib taking it away from the batter. It's a dot to finish. The power play, 6 overs done. And Sultan Warriors Baramulla have done well to come back. 48 for 1. Wasim Kachru doing the bulk of the scoring is 39 of 21. He has played some audacious shots. Skipping down the pitch, making room and playing over extra cover, and then lofting it straight down the ground was the shot of the match so far. बिल्कुल काफी पसंद जरूर किया उस स्ट्रोक को दर्शकों ने, और घर बैठे बैठे भी दर्शक उनको देख रहे हैं, और उस तरीके से जो उनका स्वाभाविक स्ट्रोक रहता है वसीम काचरू का, इनसाइड आउट और गेंदबाज के सर के ऊपर से जाना। और फिलहाल यहाँ पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर 48, थोड़ी सी वापसी जरूर सुल्तान वॉरियर्स की, वो अर्ली झटका लगा था ओवैस के रूप में। आसिम बशीर बेहतरीन साथ निभा रहे हैं वसीम काचरू का, और ये जोड़ी जिसको कुछ लोग सोशल मीडिया पे वो धर्मवीर की जोड़ी भी मानते हैं, जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी और वो कॉम्बिनेशन इन दोनों का रहता है, और वीडियो क्वालिटी, लाइव की जो क्वालिटी है वो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कमेंट्स में हम बहुत सारा जो उसके लिए वो पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं, और सारा क्रेडिट जाता है स्टेट स्पोर्ट्स लाइव की पूरी टीम, बिज बिहारा क्रिकेट एसोसिएशन को, और खासकर आरजे बशीर जो इस पूरे लाइव ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के हेड हैं,
और इस बीच नए ओवर की शुरुआत वैभव माली को फिर से इस्तेमाल किया गया बाएं हाथ के स्पिनर आसिम बशीर के लिए। और हालांकि आसिम स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं और उस जो विड्थ या उसके साथ साथ जो अतिरिक्त उछाल या हम कह सकते हैं जो फ्लाइट उनको मिलती है स्पिन के सामने काफी भावक इस्तेमाल वो करते हैं अपने बल्लेबाज अपने बल्ले को बल्लेबाजी के मोर्चे पर जब भी वो रहते हैं। इस बार थोड़ी सी जगह बनाकर खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में जा रही है, खिलाड़ी नीचे और लपका गया है एक बेहतरीन कैच। वसीम काचरू को वापस जाना होगा। इस बार वो एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन टाइम सही से कर नहीं पाए, वो एलिवेशन मिला नहीं और गेंद वाइडिश मिड ऑफ सीमा रेखा पर खिलाड़ी के हाथ में। और इस प्रकार से यहां दूसरा झटका लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। वसीम काचरू जाएंगे वापस 22 गेंदों में 39 रन बना के, और ये धचका कितना महंगा पड़ेगा आप सुल्तान को इरशाद भाई। There was that intelligent change in that length of the delivery. He bowled it well above the eye line of the batter, who was trying to give room. And have a look on the screens. Look, he had to fetch it there, and that was going to be curtains from him for him. And an exceedingly good catch in the outfield. That's never easy in this ground because you are against a backdrop, the greenish backdrop, and the ball is coming swirling towards you, and then you have to make up ground and catch that inches above the ground. That's an exceedingly good catch. Well bowled, good cricket all around, and Wasim Kachru is a big loss for Sultan Warriors Baramulla. निश्चित रूप पे वसीम काचरू का धचका लगना यहाँ पे काफी हद तक पीछे धकेल सकता है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। हालांकि आसिम बशीर अभी भी चार्ज संभाले हुए हैं नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर, अभी तक थोड़े खामोश दिखे आसिम। अमूमन उनका इस प्रकार से नेचुरल गेम ये रहता नहीं है, पहली 11 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाना, और शुरुआत में काफी तगड़ा प्रदर्शन उनका रहता है बल्लेबाजी में, काफी तेज खेलते हैं, काफी वो जो ब्रिस्क हिटिंग जिसको हम कहते हैं, काफी धुआंधार अंदाज में। लेकिन अभी तक वसीम काचरू को ज्यादा समय दे रहे थे क्रीज में, वो कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए उनको सिंगल्स डबल्स देकर वो ला रहे थे स्ट्राइक पर, ताकि उनका बल्ला जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने देना चाहिए था। लेकिन वसीम इस बार वो गेंदबाज की, जैसे आपने कहा कि आई लाइन के ऊपर से वो गेंद ज्यादा फ्लाइट, और वसीम अपना वो पसंदीदा स्ट्रोक इनसाइड आउट कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाने की कोशिश, और उसमें वो नाकाम रहे। फिलहाल नए बल्लेबाज जसमीत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जस्सी के नाम से जसमीत, और यहां वो फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर अब सामना करेंगे वैभव माली का। वैभव माली आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, एक विकेट उनके नाम उनके दूसरे ही ओवर में, और स्पिन काफी तगड़ा काम करता है। जब हम नीलंद्रुस क्रिकेट स्टेडियम बिजबिहारा की बात करते हैं, स्पिन का दबदबा रहा है पिछले साल भी, और इस साल तो शुरुआत भी बेहतर रही है वैभव माली की। और सिर्फ 2 बाहर के खिलाड़ी आज स्क्वाड में हैं एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर के। और अगर बात सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की करें तो उनकी टीम में 3 खिलाड़ी, उवैस चौधरी, उनके साथ साथ वैभव माली और समरजीत। क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। इस बार पैड लाइन पर गेंद जोरदार अपील हो रही है, लेकिन जावेद दरियाल ने मना कर दिया। लेग स्टंप से काफी बाहर मेरे ख्याल से पिच हुई थी ये गेंद इरशाद भाई, और कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट था वो भी लेग स्टंप से काफी बाहर था। हालांकि ज्यादा खुश नहीं है वहां पर वैभव, काफी नीची रही है गेंद, और इस प्रकार से काफी निराश जरूर हैं वहां गेंदबाज, लेकिन अंपायर्स डिसीजन फाइनल डिसीजन। और अब जाकर यहां से जी हाँ, लेग स्टंप से बाहर वो गेंद जरूर जा रही थी, टिप्पा खाने के बाद वो एंगल जरूर दिखा लेग स्टंप से बाहर जाता हुआ। और इस बीच आसिम बशीर सुरक्षित रहेंगे। इस बार गेंद कॉल के हाथों से ऑन साइड में धकेला, जब तक मुनीब मुनाफ गेंद को रोकते 1 रन आसानी से, 50 पूरे हो चुके हैं। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और कहीं ना कहीं अब यहां से जो जोड़ी है इनको एक साझेदारी खड़ी करने की कोशिश करनी होगी, और वो साझेदारी किस प्रकार से पनपेगी, कैसे वो साझेदारी आएगी यहां सुल्तान के लिए। Absolutely, they have to nudge the ball around and pick up ones and twos because this is a big ground. You've got acres of space, and you can pick up those ones and twos and the odd boundary, because it's not the bowler bowled 6 deliveries that are not that a batsman can't score. आवाज कम जा रही है बाहर। So the 2 batters, they need to
stitch a partnership here, a partnership of all sorts. Score runs quickly because the ball might come onto the bat nicely now. We've got those early signs in the previous over as well. But if you try to play audacious shots, then you might land yourself in trouble. There's another bowling change. Nazir Tiger has been introduced into the bowling attack. He will bowl off spin. And Asim Bashir goes big. That is out from the middle of that monstrous bat of Asim Bashir into the crowd over deep mid-wicket. And that is a humongous six. Asim Bashir, Nazir Tiger bowling outside the off stump. Thank you very much. Swipes across the line. Gets a good chunk of wood onto that and sends it flying over deep mid-wicket. A terrific start to over number 8. Asim Bashir. He gets going. Fireworks would be seen. And that's why a number of spectators have arrived here. Asim Bashir is on 15 now. Nazir Tiger. Next ball. This time he wanted to cut under edge. And down towards short third. Will pick up a single and bring his companion on strike. Just see. Was on 1 of 2. So I was mentioning a partnership is required at this stage because the start at the top of the order was given to you by Wasim Kachru, and now he's done the right job. Getting behind the line, nudging it down the ground for 1 and getting Asim Bashir back on strike. Asim Bashir has got that game. He has got that game, a controlled aggression, calculated risks, and he can score runs in quick time. That is the positive that is with Asim Bashir at the top of the order, or in that middle order. This time, he punches it up the back foot. Fielder back on the boundary. Munib Munaf does well. Restricts the scoring to just 1. And Asim Bashir now moves to 17. It took some time earlier on, but now he has started to put that foot down onto the accelerator. And Jesse joins the party. That is a terrific strike into the crowd for 6 more. Once again, Nazir Tiger was the culprit of bowling it too flatter and too faster. And Jesse saw it early. Picks the length up early. And look at that. Outside the off stump, room to work with. Across the line and smashes it for 6. Now a good delivery beats him there. He was trying to go for that late dab. Saw that fielder was inside the ring. Over finishes with a dot. 15 coming from that first over from Nazir Tiger. Jesse is not out on 8. Asim Bashir on 17. Sultan Warriors Baramulla after 8. A 66 for the loss of 2. That was a good delivery. That spun away. And that had some sort of a bounce on that occasion as well. So it was a scare for Jesse. He survives. Sultan Warriors Baramulla survive. 2 wickets down. 8 overs done. दोनों टीमें इस तराजू में लगभग बराबरी पर वापस आती हुई 8 ओवर में 66 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जस्सी 8 रन पे नाबाद वो स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से जो एक बेहतरीन छक्का बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया था उस गेंद को। और नजीर टाइगर का वो खराब ओवर 15 रन 2 छक्के। आसिम बशीर की आप चर्चा कर रहे थे। आसिम बशीर पिछले साल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और काफी पसंद करते हैं वो इस विकेट को, इन परिस्थितियों को, और खासकर जब नीलंद्रुस में उनको मौका मिलता है अपना बल्ला चलाने का तो निराश करते नहीं अपने सुल्तान फैंस को या फिर अपने जितने भी उनके चहीते हैं, अपनी टीममेट्स हैं। फिलहाल वैभव माली एक अच्छा स्पेल उनका जाता हुआ ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर हल्का सा ड्राइव कर दिया, पुश किया गेंद को, वहां शॉट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 1 रन आसानी से मिला है और स्कोर कार्ड में लगातार वृद्धि होती हुई 67 2 विकेटों के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी में बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 5th इनॉग्रल मुकाबला, पहला मैच सुल्तान वॉरियर्स बनाम एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर। इस बार भी वो लगभग रिडार में ही गेंद थी लेकिन उतनी ज्यादा गेंद इस समय उछली नहीं, हल्के हाथों से इस बार भी गेंद को खेला था। और
आप पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर। अपने 5 दोस्तों को आप टैग कर सकते हैं और आपको मौका मिलेगा एडी कैप्स की तरफ से एक प्रीमियम कैप जीतने का, उसके विजेता बनने का। तो जल्दी से अपना शेयर बटन दबाइए, अपने 5 दोस्तों को आप टैग करें और मौका आपको मिल सकता है बिजबिहारा प्रीमियर लीग के सुपर फैन बनने का। जिस प्रकार से पिछले साल भी वो रीत चली थी, पिछले साल दर्शकों को टी शर्ट्स मिलती थी जो भी सुपर फैंस थे, इस साल एडी कैप्स आपके सर पे सजेगा अगर आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते हैं, अपने 5 दोस्तों को आप टैग करते हैं और उसके बाद आपको विजेता घोषित किया जा सकता है। इस बार हल्की सी वो ओवर पिच गेंद जिसको हल्के हाथों से ही खेला और समय जरूर यहां पे ले रहे हैं अब दोनों बल्लेबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानते हैं विकेट जो 2 जल्दी गिरे हैं, हालांकि वसीम ने थोड़ा समय लिया, लेकिन ओवैस का एक बड़ा रोल रहता है। जैसा कि आप खुद शुरुआत में बोल रहे थे कि वो दोनों खिलाड़ियों में सिर्फ कद का फर्क है, बाकी गेम अवेयरनेस, खेलने का तरीका, शुरुआत में गेंदबाजों के ऊपर वो दबाव बनाना, पावर प्ले के अंदर बड़े स्ट्रोक्स खेलना, ये दोनों ही करते हैं। लेकिन ओवैस हमने पिछले साल भी उनको देखा, कश्मीर वैली में बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेली है और इस साल हालांकि बीपीएल में आज उनका पहला मैच था, डेब्यू था उनका बीपीएल में, लेकिन वो डेब्यू से ही गया नहीं। लेकिन हम आशा करेंगे आने वाले समय में उनके मैचेस अच्छे जाएं। और इस बीच 9 ओवर की समाप्ति, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ है वैभव का। फिलहाल गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, इम्तियाज को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और गेंदबाजी परिवर्तन होता हुआ आसिम बशीर उनका सामना करेंगे। एक और स्पिन गेंदबाज का यहां से आक्रमण किया जा रहा है। और इम्तियाज की बात करें तो ये भी एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज इस टीम के माने जाते हैं और निश्चित तौर पर वो दबाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहां से, क्योंकि अगर हम एलिगेंट स्ट्राइकर्स श्रीनगर की बात करें, उस टीम में आपको एक्स रणजी और एक्स जेके से क्रिकेटर्स काफी मात्रा में दिखेंगे और वो एक्सपीरियंस उस हवाले से आपसे जरूर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा इरशाद भाई। It's an exuberance of youth and that the seniority and representing the state at the higher level. So it's a mixture of both. And Elegant Strikers is a very good team, a formidable opposition for any kind of a team. Swept and swept beautifully, but the man is back. Restricts the scoring to just 1. Plenty of spin options available for captain of Elegant Strikers, and he's using them to a very good effect this far. Asim Bashir is now on strike. Good again, a spin, but that one spun away. That is the pace to bowl at his wicket. A left arm spinner having fielders everywhere. A long on, deep mid wicket, square leg, very deep. And then on the offside, you have a wideish long off and a man patrolling the boundary on the offside. And if you are bowling with a pace that allows the batsman to score freely, then you are not doing justice with your skill. As a left-arm spinner, you need to bowl slower. You need to bowl at a pace which is conducive to the conditions of which have been offered to you by the management, BCA, and the pitch so far has done brilliant. It has helped both the bowlers as well as the batters. This time goes back onto the back foot, but once again, nothing to work away with. Imtiaz Ahmed is bowling a superb over. The left arm spin has worked well. Vaibhav Mali has bowled 3 overs, 1 for 13, and Imtiaz Ahmed none for 4 of his first 5. Suggests that if you bowl with a decent pace, you bowl with some sort of a variety, you are going to get some purchase. Once again, slower. And Asim Bashir had to adjust with his stroke. First, he was trying to go over mid-wicket. Then, seeing that ball was slower through the air, he had to adjust and knock it away onto the onside for 1 to finish over number 1 from Imtiaz, who just gave away 5 after the completion of 10 at the halfway stage. Sultan Warriors Baramulla, a 72 for the loss of 2. और 10 ओवर का यहाँ से सत्र समाप्त हो चुका है और यहाँ ड्रिंक्स का ब्रेक लिया जा रहा है। तब तक वो प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए आज कप्तान नदीम डार और आजिम रथर, आसिम बशीर, जस्सी, नदीम भट्ट, सलमान, समरजीत, ओवैस अहमद, वसीम काचरू और जहूर जोलो, और उनके साथ अंडर 19 कैटेगरी में आतिफ गुलजार को टीम में जगह मिली है। और उनके साथ साथ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बात करें तो कप्तान अहमद बांडे, अभिषेक पाठक, आसिफ खान, इम्तियाज अहमद, मुनीब मुनाफ,
नासिर रसूल, नजी टाइगर, ओवैस शाह, उमर निसार और वैभव माली के साथ अंडर 19 कैटेगरी में साकिब नजीर को जगह मिली है। और ये एक आपने शुरुआत में बात छेड़ी थी, लेकिन आपने उस बात को कंप्लीट नहीं किया था वहाँ पे, और मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर रही है। और इस साल जो हर टीम को एक अंडर 19 खिलाना ज़रूरी है, एक अंडर 19 प्लेयर खिलाना ज़रूरी है, और वो खिलाड़ी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करना चाहिए, वो सिर्फ JNK का इसमें अलाउड रखा गया है। और इस हवाले से जो एक मौका दिया गया है यंगस्टर्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का, और बड़े मंच पे BPL जैसे मंच पे अपने आप को अपना मेटल शो करने के लिए, अपनी वो अंदर की जो उनके पास वो टैलेंट है, उनके पास वो जो किसी के पास इस प्रकार का वो गॉड गिफ्टेड अंदाज रहता है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, उसको दिखाना, लोगों को दिखाना, क्योंकि BPL सिर्फ कश्मीर नहीं देखता, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं देखता, BPL पूरा विश्व देखता है। और ऐसे में अगर आप अपना टैलेंट शो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर काफ़ी सारे नजर रहेंगे, हज़ारों की तादाद में लोग आपको देखते हैं। और उसी तरीके से जो बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक अलग ही तरीके से इस साल एक अंडर 19 प्लेयर, और वो भी सिर्फ जम्मू कश्मीर का प्लेयर हर टीम में ऐड होना चाहिए। और ओवरसीज़ की बात करें या हम बाहर के JNK से बाहर के जो प्लेयर्स हैं, उसमें आप सिर्फ मैक्सिमम आप 3 प्लेयर्स खिला सकते हैं। और कोई टीम ऐसी भी होती है BPL में जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देता है अपनी टीम में, कोई 1 प्लेयर्स को लाता है, कोई 2 प्लेयर्स को, और कोई 3 के साथ जाता है, जैसे आज सुल्तान ने 3 प्लेयर्स को जगह दी है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो पूल A का ये मुकाबला, हालांकि आपको याद होगा आज से लगभग 3 दिन पहले इस महासंग्राम की जो शुरुआत स्थापना होने वाली थी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के उस मुकाबले से, लेकिन उसके बाद वो शायद कुदरत को वो मंजूर नहीं था उस दिन, और बारिश के कारण उस मुकाबले को जो है रद्द करना पड़ा था, उस समारोह को रद्द करना पड़ा था। हालांकि दर्शकों में बहुत सारा वो जो उत्साह देखने को मिल रहा था उस दिन, काफ़ी उत्साहित, काफ़ी एक्साइटेड लोग थे उस मैच को लेकर। लेकिन आज जब हम दर्शक दीर्घा पे नज़र दौड़ाते हैं तो दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में, जहां भी नज़र दौड़ाएं वहां आपको दर्शक दिखेंगे। और कैमरा वर्क, कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और लाइव स्ट्रीमिंग, आप किस प्रकार से इसका मनोरंजन ले रहे हैं आप ज़रूर साझा कर सकते हैं कमेंट्स में, और इस लाइव कवरेज को आप शेयर करके अपने 5 दोस्तों को टैग ज़रूर करें, और मौका आप वो ले सकते हैं एक सुपर फैन बनने का। और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको एक प्रीमियम AD कैप से भी नवाजा जाएगा। फिलहाल ड्रिंक्स की ब्रेक समाप्त होती हुई और गेंदबाजी में यहां परिवर्तन किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से मुनीब मुनाफ को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो वहां पे थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा तैयार वो कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए। और मुनीब मुनाफ JKC को रिप्रेजेंट किए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर, और मिडिल ऑर्डर में इनकी बल्लेबाजी काफ़ी खतरनाक रहती है और किसी भी गेंदबाजी यूनिट को ये खराब कर सकते हैं। और इस बीच आधा सफ़र जो है सुल्तान का बल्लेबाजी में समाप्त हो चुका है। और क्या 10 ओवर में 72 से इरशाद भाई वो खुश रहेंगे? Yes, absolutely, because the pitch, the way it was playing in the first 6 overs, the ball was not coming onto the bat properly because of that moisture in the surface. That's the customary legacy of this BPL. It has been there in Nilendrusu cricket ground whenever this BPL has started. The previous edition saw this edition as well. And that's the beauty of the curator of this BCA. He has done an exceeding job, keeping in mind that nowadays cricket is a hell full bowlers. Whenever you come as a bowler, you get plenty. You go for plenty and your morale is going down and then your cricket is affected. But this is the beauty of BCA. Bijbihara Cricket Association has kept that in mind, that the bowlers might get... That's a good shot of the back foot as the next over has been started by Muneeb Munaf. The bowlers should get a chance to represent their teams and prove themselves and prove their mettle as well. That's why you see some sort of a help for the bowlers as well as the batters. 72 for 2 for me is a very good score, because you're Asim Bashir there, you're Jassi there who's trying to hit his straps. Asim Bashir is there. If he bats through the innings, he has to bat through the innings to take this to a respectable score. But Muneeb Munaf is bowling intelligently. He's taking that pace off. And the captain and the players of Elegant Strikers Srinagar have spotted this well. They're taking pace off this strip
is the name of the game for them. And they are letting the batters to make their own pace. And that is a wonderful achievement so far for the bowlers. So it is 50-50 right now after 10.2 overs. Sultan Warriors Baramulla 73 for 2. And Jassi is on strike. Munib Munaf so far has been good with his first 2. But he has to finish this over on a very good note. This has gone up in the air. Fielder coming underneath, takes it easily, a tumbling effort. But nonetheless, he holds on to that. And this is what I was mentioning. You bowl slower, you get that purchase from the strip, and the batsman who was once again trying to go across the line, and he has seen his demise. Wicket number 3, Sultan Warriors Baramulla. They are in some sort of a bother now, because losing your 3 top order batters, that for nothing, 73 for 3 in 10.3. The way they bat, he was trying to go over mid-off this time, but leading edge finding its way straight into the hands of the fielder coming from the boundary. So I was mentioning the way they go about their innings, the reputation they carry as batters in the rest of the leagues. They might have scored 100 plus runs in 10.3, but this is Bijbehara Premier League. This is the aura. This is the variety that you get as a batter. You have to consolidate. You have to earn runs here. You don't get runs for free. You don't get belters. You come and play straight through the line. You have to earn, and that is what makes a batter a batter. You have to adapt to the conditions, play according to the conditions, and then if you score runs, then and only then you prove yourself to be a champion. And that is why this is a league where champions are crowned. This is a league where the batters, the fielders, the bowlers, they rise to the glory. That is why BPL Edition 5 come up with that theme, Rise to Glory, presented by TCI Max Edition 5. Elegant strikers, Srinagar on top. Munib Munaf having a word with umpire Javed Daryal. Has got a deep square leg, a long on and a mid-wicket. Bowling outside the off stump, because he has got a fielder in that deep position, sweeping on the offside at deep point boundary, and he is bowling according to his field. A long off, deep point on the boundary, and he's bowling slower, and he's bowling away from the radar. That one was onto the stumps, a quick delivery. The batsman driving it on the up, down the ground. Asim Bashir and Nadeem Dar, they have to stitch a partnership. Nadeem Dar, captaining the side, has got the responsibility. Now he has to shoulder that responsibility of getting his side to a respectable total where they can challenge the side of elegant strikers. Asim Bashir is on strike. Munib Munaf, once again, back of the hand, slower delivery. Well spotted by Asim Bashir. Nudges it onto the onside to pinch one more to finish the first over from Munib Munaf. A sensational over to start with, only 3, and taking the wicket of Jassi. Sultan Warriors Baramulla finding themselves at 75 for 3 after 11. एक बढ़िया ओवर वापसी करता हुआ ओवर और वापसी करवाता हुआ ओवर यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर को, और इस तरीके से यहाँ सिर्फ 3 रन्स आए मुनीब मुनाफ के उस ओवर में, साथ में वो विकेट भी। और जैसा कि हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, वो एक्सपीरियंस है उनके पास। और अब जाकर कप्तान नदीम डार, जैसा कि चर्चा हो रही है उनकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आज लेनी है। हालांकि बैटिंग लाइनअप में अब आपके पास ज़हूर ज़ोलो का आना बाकी है, आपके पास नदीम बट हैं, लेकिन यहां से एक पार्टनरशिप बहुत अनिवार्य है। बाएं हाथ के स्पिनर इस बार जगह बनाने की कोशिश, ऑन साइड में गेंद को खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन दिशा में उस, और खिलाड़ी वो पहरा दे रहे हैं डीप में, और मात्र 1 रन यहां से मिल जाएगा बल्लेबाज को। आसिम बशीर काफी समय ले रहे हैं और लेना भी पड़ेगा। अब इस समय पर आप कर भी क्या सकते हैं, समय लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करना होगा, उसके बाद आप प्रहार कर सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर। और यहां से कप्तानी पारी की बहुत आवश्यकता है नदीम डार से, और दर्शक चाहेंगे आज, उनके फैंस, उनके चहीते चाहेंगे उनसे आज एक बड़ी पारी। एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं नदीम डार, टीम के कप्तान। बाएं हाथ के स्पिनर इस बार भी
थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, हल्के हाथों से बैकफुट पे जाकर गेंद को ऑन साइड में धकेला, जब तक मिड ऑन पर गेंद को रोकते। 1 रन और खाते में, और कहीं ना कहीं यहां से टीम को वो साझेदारी वापस ला सकती है, क्योंकि साझेदारियां आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक काम करती हैं। गेंदबाज इस बार फ्लैट दी है, बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, और गेंद सीधे स्टैंड्स में। एक और छक्का, और आसिम बशीर अब चार्ज लेते हुए, इस बार वो उनके रिडार में जब भी गेंद आती है, इस बार बल्ले के बीचों बीच हिटमैन का ये गगनचुंबी मिड विकेट और मिडान के बीच में से, और दर्शकों ने हेलो हाय और टाटा बाय बाय इस बार गेंद को कहा। बेहतरीन शॉट ये, आसिम बशीर के पास रहता है इस प्रकार का मवाद उनके बल्ले में। इस बार फिर से वो, जिसको आप अंग्रेजी में वो स्पन अवे कहते हैं, पढ़ने के बाद बाहर निकालना गेंद को, और मेरे ख्याल से वो कला जो इस स्पिनर में है, गेंद को बाहर लेकर जाने की, बल्लेबाज के रिडार से दूर रखने की, ताकि वो उस स्लॉग में फंसे, वो उस कट शॉट में फंसे, वो उस पुल शॉट में फंसे। इस बार हल्के हाथों से अलोंग विद द टर्न गेंद को देखिए, एक्स्ट्रा कवर दिशा में 1 रन बनाने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 84 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर का खेल प्रगति पे है। 9 रन आए हैं अभी तक 5 गेंदों में, और स्लिप को हटा गया है नदीम डार के विरुद्ध। उस स्लिप को हटाकर एक शॉट थर्ड मैन का खिलाड़ी, एक शॉट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पंच करने की कोशिश, गेंद उस दिशा में जा रही है, डीप कवर्स पे खिलाड़ी, जब तक थ्रो आता वापस। 1 रन और खाते में, ओवर की हुई समाप्ति। 10 रन इस ओवर में, और 12 के बाद 85, 3 विकेटों के नुकसान पर इनॉग्रल मुकाबला TCI मैक्स प्रेजेंट्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग, TCI मैक्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 5 सीजन 5। और इस साल सिर्फ 12 टीमें आमने सामने हैं इस रेस में, 12 बेहतरीन टीमें। पूल ए में 6 टीमें, पूल बी में आपको दिखेंगी 6 टीमें। वैली की सबसे बड़ी और सबसे फेमस टीमें इस साल आपको मिलेंगी बिजबिहारा प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन में। पूल ए में एलिगेंट स्ट्राइकर्स, JK11 शुपया, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, स्काई स्टार्स बडगाम, सोपोर ऑस्ट्रेलियंस और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। और पूल बी की बात करें तो हिलव्यू राजौरी के साथ कमल टाइगर्स, मुराद्स 7th स्ट्रीट, टीम जासिफ, द रियल सुल्तान समरबग और यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर, पिछले साल के चैंपियंस। और इस बार नए ओवर की शुरुआत मुनीब मुनाफ के हाथ में गेंद। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 85, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीन विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। मुनीब मुनाफ पिछले ओवर में वो विकेट, वो साझेदारी जो पनप रही थी वहां जस्सी और आसिम बशीर के रूप में। नदीम डार इस बार ऑन साइड में स्लॉग करने की कोशिश, सही से संपर्क हुआ नहीं, गेंद बल्ले के निचले भाग से लगकर फाइन लेग दिशा में जाकर 1 रन जरूर देगी नदीम डार और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। सिंगल के साथ 86 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जो टीम वर्क आगे डाला है बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन ने, ग्राउंड्समैन और टेक्निकल टीम, मैच ऑफिशियल्स, ऑन फील्ड अंपायर्स, कमेंटेटर्स, लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की जो भूमिका निभाती हुई यहां पे स्टेट स्पोर्ट्स लाइव की टीम। इस बार की निकल पड़ी है सीमा रेखा से बाहर। हालांकि बल्ले से नहीं बल्कि बाई के रूप में ये 4 जरूर मिलेंगे सुल्तान वॉरियर्स को। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, पूरी तरीके से वहां बीट हुए थे आसिम बशीर, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन देकर जाएगी। 4 के साथ स्कोर 90, 3 विकेटों के नुकसान पर। 12.3 ओवर की गेंदबाजी में सुल्तान टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी का किया था फैसला। हालांकि पिछले साल की आपको वो उनका इनॉग्रल मैच याद होगा, हिलव्यू राजौरी के साथ खेला था, लेकिन उस मुकाबले में मात दी थी हिलव्यू राजौरी ने सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को उस इनॉग्रल मुकाबले में। लेकिन इस साल हिलव्यू राजौरी पूल बी में, लेकिन रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब जिनके साथ इस साल इनॉग्रल मुकाबला सेट था वो बारिश के कारण एबेंडॉन किया गया था। और
आज एलिगेंट स्ट्राइकर्स श्रीनगर के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का पहला मैच हो रहा है और ऐसे में 12.4 ओवर के बाद 91 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Munib Munaf once more bowling brilliantly, taking the pace or bowling those cutters and getting a good help from this strip of 22 yards. That has been brilliant so far. Another brilliant over. He's given away just 4 runs from this over. He's bowled 2 overs for 7 runs and picked up a wicket. And Asim Bashir is struggling. 32 of 31. Nadeem Dar 5 from 7. Sultan Warriors Baramulla after 13. At 93 for the loss of 3. And what elegant strikers have done brilliant is they have come up with a homework against every batter. They have read and they are reading the minds of the batters out there. And that is why they haven't given away anything of some substance so far. Projected score looks 143, but that is below par here. Rocks back onto the back foot. Smashes it into the gap. And that is a very good start. A good start to the over. Might have gone to the boundary. And the fielder has done everything to stop that ball. And that might be checked. I'll wait for the umpire's signal. That ball was speeding away. Waiting for the ball and then smashing it on the up. And the fielder, has he done a job to stop that ball? I think he has. The next ball going in the same direction. And the batsman coming back for another couple. That was very close there. A boundary check there. It has been sent upstairs. Nadeem Dar is the batter on strike. Smashing a couple of deliveries towards that offside. That's the cover boundary. Fielder coming from deep extra cover. So far a boundary and a single has come up in this over. Imtiaz. He has bowled well as well. Once again, no timing whatsoever. This time it was Nadeem Dar. He was trying to smash this down the ground, not getting any connection whatsoever. However, he gets one more. 6 runs so far from the first 4 balls. After conceding that boundary, that's a good comeback from Imtiaz. This time to Asim Bashir and taking it away, spinning it away. Bowling slower through the air, not giving any room whatsoever. And Asim Bashir and Nadeem Dar, they are struggling to put bat onto the ball. And they are struggling to find boundaries. The boundary drought continues despite that boundary. That was not a good effort from the fielder in the deep. Once more. This time he belts it straight down the ground. That will go into the boundary for 4 and that spoils the over as well. Asim Bashir said enough is enough. Rocks back onto the back foot. And a baseball style of his own. Smacks it, Nadeem Dar. Down the ground and picks up a boundary to close this over on a high. 3 overs, none for 26. Imtiaz Ahmed. And 100 comes up for Sultan Warriors Baramulla after 14. They 103 for the loss of 3 wickets. और सुल्तान्स की रेल अब पटरी पे वापस आने की कोशिश कर रही है। नदीम डार और आसिम बशीर उस कोशिश में लगे हुए हैं। इस टीम के कप्तान और इस टीम के सबसे महारथी बल्लेबाज आसिम बशीर 34 गेंदों से उस दबाव को झेला है उन्होंने। जब एक समय पर दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी, वो दूसरे एंड पर
वो बर्दाश्त कर रही थी कि भाई साहब हो क्या रहा है, और अब जाकर उन्होंने थोड़ी सी वापसी यहां दिला दी है टीम को। इस बार पैडलाइन पर गेंद फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन वाइड का वहां से इशारा आता हुआ, लेकिन विकेट कीपर ने आज पीछे से काफी तगड़ा कमाल किया है, और विद इन नो टाइम गिलियां बिखेरते हुए। एक 104 3 विकेटों के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पंच कर दिया गेंद को कवर्स की ओर, 1 रन खाते में। और गेंदबाजों की अभी तक बात करें तो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। नासिर रसूल 2 ओवर डाले, 9 रन खर्चे, कोई विकेट नहीं। साकिब 3 ओवर 29, 1 विकेट। वैभव माली का स्पेल काफी तगड़ा गया है, 3 ओवर में 13 रन, 1 सफलता। नजीर टाइगर थोड़े महंगे पहले ओवर में चले गए। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश, गेंद काफी देर हवा में, क्या विकेट आ सकती है? और जी हां, लॉन्ग ऑफ पर एक आसान सा कैच, और कप्तान नैडी को वापस जाना होगा। उनके खाते में सिर्फ 14 रन, एक खराब स्ट्रोक है, काफी देर हवा में, और वो सीधे बल्ले से नहीं ले पाए, बल्ला थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था स्ट्रोक खेलने के टाइम पे। और इस प्रकार से यहां एक और बड़ा धचका लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के कप्तान शिकार बने हैं मुनीब मुनाफ के। दूसरी सफलता मुनीब के नाम, और सुल्तान के कप्तान मात्र 14 रन पे ढेर हुए 12 गेंदों का सामना करने के बाद। ये विकेट बहुत अहम थी इस समय पर। Yes, it will make a huge difference. Probably that shot was on definitely, but he went through earlier. And if you play early through the shot, then you are not able to put that pace behind the ball to carry it beyond the boundary. There is the error that was made by Nadeem Dar, but nonetheless he has gone back, and the Sultan Warriors Baramulla lost their 4th wicket, and out comes Zohr Zolo, who has been in some supreme form this season. Asim Bashir is still there, 35 of 35. He might be a runner ball 35, but once it comes to the closing finish, he might be a very dangerous customer. He's taking his time because he knows that a stage will come. This is the 15th over. Now is the time for him to put that foot down onto the accelerator and take the bowlers and take that aggression back onto the bowlers and score freely and aggressively. Zohr Zolo has got a good reputation of finishing an innings on a very high note as well. But Muneeb Munaf, what an exceptional spell that has been. Intelligent, taking the pace off, bowling cutters, and getting a batsman out of the stature of Nadeem Dar. That too earlier in his over. That takes some skills, it takes some guts and guile. And Muneeb Munaf has shown that. 2 for 10 in his 3rd over. Once again drives, finds the fielder inside the ring. Ahmed Bande, the skipper, does well on that occasion. No runs, dot ball. And every dot ball is going to put pressure not only on Zohr Zolo but on Asim Bashir. Fielders everywhere on the boundary protecting. He goes for the big shot, and that shot was invited probably because of the dot ball pressure. Across the line, that is not Zohr Zolo's game. He likes to hit straight and play the field. He takes calculated risks. He's a very good batter. But that shot probably came up with that dot ball pressure. So far a wicket, a wide. Only 5 runs coming of the first 5 deliveries. And that too when you're bowling the 15th over and Sultan Warriors Baramulla batters are struggling. It's a good delivery. Shout for LBW in front, pinned in front, and that is who? It is Asim Bashir. What a time to get a wicket, and what a bad time to lose a wicket, and that to Asim Bashir, who could have made a huge difference. Muneeb Munaf, what a champion bowler he's turning out to be. 3 for 11 from his 3. Sultan Warriors Baramulla in all sorts of problems. A 108 for 5. 108 पे गिरी है 5वीं और सबसे बड़ी विकेट। मुनीब मुनाफ साफ कर रहे हैं सुल्तान्स को, और वापसी का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है यहां आसिम बशीर के लिए। एक लंबी पारी, एक स्ट्रगलिंग पारी, और बिल्कुल स्टंप्स के सामने, प्लम्प इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स जिसको कहते हैं, सामने पाए गए।
और जावेद दरियाल ने बिल्कुल देखते ही उंगली खड़ी कर दी हवा में, और इस प्रकार से पांचवा झटका, आधी टीम वापस, और 108 पे गिरी पांचवी विकेट। मुनीब बुनाफ के नाम तीसरी सफलता, और वो सेलिब्रेशन खुद दर्शाती है कि ये विकेट कितनी कीमती थी, ये विकेट कितनी बहुमूल्य विकेट थी। और अगर आसिम बशीर इन 5 ओवर्स में क्रीज में रहते तो खतरा वो बन सकते थे यहाँ टीम के लिए। अब जाकर कुलगाम बॉय एक और मैदान के बीच में नदीम बट को भेजा गया है, और इनके पास भी बल्लेबाजी में वो स्ट्रोक्स काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियां कुछ अलग हैं। यहाँ डायमेंशंस आपको उस प्रकार की नहीं मिलेंगी जिन डायमेंशंस के लिए आप यूज्ड हुए हैं, और वो गेंदबाजी भी उस प्रकार की नहीं मिलेगी, और वो क्राउड, वो नर्वसनेस जरूर बल्लेबाजों के चेहरों पे देखने को मिली है आज। वसीम कासरू ने शुरुआत में थोड़ा सा वो सेट किया था उस पारी को, एक अच्छा किक स्टार्ट दिया था उन्होंने सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को, लेकिन ओवैस कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 1 रन बनाकर वो आउट हुए थे ओवैस अहमद। वसीम काचरू 22 गेंदों में 39 रन, 5 चौके 2 छक्के आज उनके नाम। आसिम बशीर अभी अभी आउट हुए हैं, 36 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर 2 छक्के और 1 चौका उस पारी में शामिल। जस्सी ने मात्र 10 रन बनाए, और नदीम डार 14, जोहूर जोलो 3 पे नाबाद, नदीम बट उनको ज्वाइन कर चुके हैं। और ये आपके स्क्रीन पर टॉप फैन ऑफ BPL 5 यानी कि 5th एडिशन में आप टॉप फैन बन सकते हैं। उसके लिए आपको वो BPL की तरफ से एक कस्टमाइज्ड प्रीमियम कैप मिलने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक एंड फॉलो द ऑफिशियल BPL फेसबुक एंड यूट्यूब, शेयर द लाइव पोस्ट एंड टैग योर 5 फ्रेंड्स। आपको यूट्यूब पर BPL की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ साथ BPL फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइव को शेयर करके अपने 5 दोस्तों को टैग करना है। और उसके बाद आप BPL के टॉप फैंस में आ सकते हैं, और आपको BPL की तरफ से एक कस्टमाइज्ड प्रीमियम कैप मिलने वाली है। फिलहाल यहां से तो काफी मुश्किलात में डाला गया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को, और वापसी करने के लिए करना क्या होगा, मेरे ख्याल से अब ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे सेट होने का, 5 ओवर ज्यादा समय रहा नहीं सेट होने का। और नदीम बट के साथ जोहूर जोलो, वो पीछे से आवाज आ रही होगी जोहूर जोलो हाथ खोलो, लेकिन खोलेंगे कैसे, वो समय अब उतना ज्यादा रहा नहीं है। अगली गेंद नदीम के लिए इस बार पूरी तरीके से बीट कर दिया, कमाल की गेंदबाजी। हालांकि इम्तियाज के बारे में चर्चा हुई थी पहले, काफी वो दिशाहीन गेंदबाजी जरूर की थी शुरुआत में। 27 रन अभी तक खर्चे 3.2 में, और 26 आए थे उनके 3 ओवर में शुरुआत में। हालांकि अभी तक विकेटलेस, लेकिन कुछ गेंदें ऐसी डाली है ना, पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाजों को आज बयात के स्पिनर। इस बार आगे की गेंद हल्के हाथों से मात्र धकेला गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की, और वहां से खिलाड़ी साकिब नजीर आए। 1 रन आसानी से मिला, और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 110, 5 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी में जोहूर जोलो 4 पे नाबाद 4 रनों से। आगे की गेंद ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक मिड ऑन पर खिलाड़ी नासिर रसूल, और 1 रन आसानी से यहां भी मिला। पंद्रह 111 पे 5। Vaibhav Mali flights this one up, goes straight down the ground. Has he beaten the fielder? That is an exceptional effort in the field. Beautifully done, with the fielder coming from the long off boundary and saves 2 runs for his team. That's exceptional work. To finish Vaibhav Mali's 4th over. That was a brilliant effort. Efforts like these, they pump your bowlers and they bowl like this. 4 overs, 1 for 19. That is Vaibhav Mali, exceptional bowling spell on a wicket which was taking turn earlier on. He's bowled with a decent pace and he has kept every batsman at bay. That is brilliant bowling from Vaibhav Mali. Zuhur Zolo and Nadeem Butt finding themselves in a situation
where only 4 overs are left, and a challenge in front of them will be to score in excess of 150. 114 for the loss of 5. Fielders everywhere on the boundary. He has got the protection. Is it Imtiaz Ahmed who has been introduced from the far end? Are we going to witness a bowling change? By the looks of it, it looks like Imtiaz Ahmed to bowl his 4th spin. And we have seen only 2 seam bowlers so far, including the option of Munib Munaf as well. Down the ground, clears the fielder. That has gone straight as a dive for a 6. Nadeem Bhatt opening his shoulders on that occasion. First ball, smashing it down the ground for a 6. It's a good start to the 17th over. And now Imtiaz Ahmed. That was in the radar. And that was beautifully lofted down the ground and clearing the fielder with ease. Munib Munaf and the 2 other seamers, 3 seamers. And couple of spinners. This time goes reverse. Beats the fielder. That will be back-to-back boundaries. A 6 followed by a boundary. Nadeem Bhatt has joined the party. They have decided to make this a big over. The start is exceptional. Not an easy shot to play, but he has played it with perfection. He had to beat that fielder in the inside ring, and once he did that, that was always going to run away for a boundary. Imtiaz Ahmed. Now what has he got on his 3rd ball? He will be under some pump. Sultan Warriors Baramulla. They're getting a lift. They're getting that momentum. This time he knocks it away onto the offside. That's good cricket. That's smart cricket. That's normal batting. 2 bad deliveries punished. The next ball, respect given, but not a dot ball, bringing Zuhur Zolo back on strike. This time flights. The bat is flying, not the ball. And that's a rare sign. We often saw it happening during India-England Test series. It was the batsman from the wicketkeeper batter of India, Rishabh Pant, sending his bat flying over the head of those English fielders. This time it was Zuhur Zolo. He was trying to throw that kitchen sink onto that, to send it onto the road probably. But the ball spun away, as Imtiaz Ahmed has done throughout his bowling spell. Now that bat is being checked. Is that umpire checking it? Or is Zuhur Zolo checking its handle? The handle might have snapped away from the shoulder of the bat on that occasion. That fell with a thud. But it's okay. Everything is okay. And the game is about to start again. Imtiaz Ahmed has been expensive. None for 38 in his 4th. 2 more balls to come. Most importantly, it was a dot ball. And now Zuhur Zolo is practicing the right kind of a shot. He should have gone over extra, inside out. Long off is on the boundary. Cover is on the boundary. There's a huge gap between long off and cover. Probably might have picked up a boundary. Imtiaz Ahmed. So far, 11 runs from his first 4. This time he goes over extra cover and he finds it into the crowd. That is the way to go about it. That is the shot that he was practicing when his bat flew in the air. That is an exceptional shot. Full face of the bat and smashing it over his dugout into the stands. Lovely cricketing shot. The best of the lot so far in this game. This time he works it away onto the onside. Should look to come back for 2. Munib Munaf is quick. He will limit the scoring to just 1. An expensive over comes to a close. He gave away 18 runs from that over.
45 from his 4. He's gone for plenty, Imtiaz Ahmed. 17 overs done. Sultan Warriors Baramulla. A 133 for the loss of 5. Nadeem Butt, 13 of 6. Strike rate of more than 200. Zohd Solo, too, has joined the party. 14 of 9. These two batsmen, they are known for their furious ball striking. They can go big. They've got 3 overs. If they are able to score in excess of 30, the score will go in the vicinity of 170. And to me so far, as we have seen the behavior of the pitch, that might be a very good score. Nasir Rasool is back with his second stint. In his first, he's given away only 9 runs from his 2 overs. Zuhur Solo will be on strike. 14 of 9. Elegant strikers so far have done well, but they have to finish well here. If they finish well, they pick up a couple of wickets more, this score, this innings might derail, and they might get below 150 in their allotted 20. Nasir Rasool, in the previous editions, Nasir Rasool, he was a sensation from elegant strikers. He bowled superbly. This time around too, he might not have picked up a wicket, but he has given away only 9 runs. And the ball was talking a lot in his first burst. Have a look at the field. It's gonna stay the same. From the media centre end, Nasir Rasool is going to bowl his 3rd. Long on. Wide-ish on the boundary, deep mid-wicket. There is a deep square leg in front of the square leg umpire. Fine leg is on the boundary. He backs away. Punches this one down the ground. Should look to come back for 2. The fielder does well. Vaibhav Mali limits the scoring to just 2. That wasn't from the middle of the bat, the way he would have liked. Zurzolo is on strike now. Next ball gets an under edge. Is not able to beat the wicketkeeper on that occasion. Nasir Rasool slowing the ball on that occasion, taking the pace off, running the fingers on the ball, and beating the batsman who was trying to smash it past extra. So far, a good start from Nasir Rasool. He has to finish strongly then. The 3rd ball. This time, he goes straight down the ground. Has he got the distance? He has. Hitting those advertising hoardings. Smashing it on the up. And picking up the maximum result. Brilliant shot from Zuhur Zolo. That's what he's known for. That's what he does at the back end of the innings. Nasir, once more. This time, fingers ran on the ball, slowing the pace, and that's the way to go at it. A nice comeback after being hit for a 6 back over his head. Couple of runs, then a dot, a 6, followed by a single. 2 more balls to come. Nadeem Butt is on strike. And Nadeem Butt, one of those fierce ball strikers. Firmly, he hits the ball a long distance. He's on strike now. Comes down the wicket and launches it. Where has that one gone? And that is landing straight into the hands of the fielder. Coming from the boundary. Eyes on the ball. Height. No distance. Probably might have gotten too closer to that ball. That's why there was more height than that elevation, than that distance. More elevation, less distance, and it was safely pouched. And look at that. He got too closer to the ball. More elevation, no distance, and finding the safe hands of the fielder coming from the long on boundary. Wicket number 6. 17.5 overs, 142 for 6. Nadeem Butt has gone back, promised a lot, but then against the run-up play, had to go for it, has lost his wicket. So Nasir Rasool coming back strongly and picking up a wicket.
so far has given away only 9 runs. And if this ball is a dot ball or a single, then this will be a very good over, because he has taken a wicket in this over as well. Zohar Zolo is at the non-striker's end. The new batter striding out in the middle is Sultan. He will be on strike, and he has to go from ball number 1. No time to waste at all. They have 4 wickets in the bank. Sultan is surveying the field. Nasir Rasool is adjusting his field, having a fielder at deep cover. The final delivery into the block hole. Dug out nicely. They might look to come back for 2, but the fielder does well. Munaf has been everywhere. Exceptional fielding skills. Limits the scoring to 1. 3 overs, 1 for 19 for Nasir Rasool. 18 overs done. Sultan Warriors Baramulla. A 1-4, 3 for 6. 12 legitimate deliveries to come. How many can they get? Zohar Zolo will be on strike. एक अच्छी साझेदारी खड़ी की थी ज़ोहर ज़ोलो के साथ नदीम बट ने। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रोक खेला था, हालांकि वो भी लगातार बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना चाहते थे, और इस समय पर करना भी वही है, बड़ा स्ट्रोक हर गेंद पर ढूंढती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। 143 6 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति 143 6 विकेटों के नुकसान पर, और सलमान फिर से स्ट्राइक पे गेंदबाजी में। यहां से मुनीब मुनाफा है अपना आखिरी ओवर लेकर। 3 ओवर में 3 विकेट्स और 11 रन्स मात्र खर्चे, 3 सफलताएं, और क्या कमाल का स्पेल गया है आज मुनीब मुनाफ का, वो उस एक्सपीरियंस को दर्शाते हुए। यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की वो रीत रिवाज वाली जो बैटिंग लाइनअप है उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने में कामयाब रहे। वो बार हल्के से गेंद को खेला, वहां खिलाड़ी तैनात कवर्स के अंदर 30 गज धारे के अंदर, और 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 144 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदें बची अब आपके पास सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, और 4 विकेट्स हाथ में। सलमान कभी कभार बैटिंग में काफी हद तक उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में दिखाया है, वो बैटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी में काफी कमाल रहा है उनका अतीत की। अगर हम बात करें सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक युवा गेंदबाज हैं। इसके बाद बल्लेबाजी में आतिफ गुलजार का ना बाकी, आपके पास समरजीत हैं। 145 6 विकेटों के नुकसान पे 9 गेंदें बची हैं अब आपके पास। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना आसान रहता नहीं जब आपके पास जोहर जोलो जैसे बल्लेबाज खड़े हों। 14 गेंदों में 24 पे नाबाद, लेकिन यहां कंट्रोल में है मुनीब मुनाफ। कंट्रोल में उनका स्पेल गया है आज। 21 गेंदों में खर्चे मात्र 13 रन्स और 3 सफलताएं अर्जित किए। मुनीब मुनाफ महारथी है इस खेल के। ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, इस बार भी वो एलिवेशन मिला है, लेकिन इस बार डिस्टेंस भी मिला है, और गेंद सीधे दर्शकों के अंदर। एक बेहतरीन स्ट्रोक सलमान का, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बैटिंग में भी अपना लोहा मनवाया है अतीत के मैचेस में, और यहां इस बार बल्ले के बीचों बीच, दर्शकों के बीचों बीच, बाउंड्री लाइन से काफी दूर गेंद को डिपॉजिट किया है, और इस प्रकार से 150 पार कर चुकी है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। 151 6 विकेटों के नुकसान पर 18.4 के बाद मुनीब चले। इस बार भी एक और बड़ा स्ट्रोक, इस बार मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, और इस बार भी गेंद दर्शकों के अंदर। उस दर्शक दीर्घाह में गेंद को डिपॉजिट कर दिया है। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। सलमान अपना जौहर दिखाते हुए, आत्मसम्मान दिखाते हुए कि किस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं। आगे की गेंद थी, और इंतजार कैसा किया उन्होंने, वो समय लिया। उन्होंने जानते थे एक धीमी गति की गेंद है, लेकिन रिडार में है, और एक बड़ा स्ट्रोक 6 रनों का। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। डेथ ओवर्स, आखिरी ओवर्स में इस प्रकार के स्ट्रोक्स आपको लेने बहुत जरूरी होते हैं। जब आपके हाथ में 4 विकेटें बची हों तब तो और जरूरी बन जाता है।
157 6 विकेट के नुकसान पे 7 गेंदें बची हैं। क्या 170 180 तक जा पाएगी टीम? इस बार नीचे रहती हुई गेंद, इस बार भी दिमाग में वही था कि गेंद को बाहर भेजना है, लेकिन थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, डिसीव हुए वहां पर बल्लेबाज, चकमा खा बैठे और इस तरीके से मुनीब मुनाफ का स्पेल समाप्त हुआ। 4 ओवर 25 3 विकेटें। खुश तो जरूर होगी आज एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर की पूरी मैनेजमेंट और उनकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है इस गेंदबाजी स्पेल से। मुनीब मुनाफ वो दर्शाया है आज उन्होंने कि एक्सपीरियंस भी काम आता है। जब आप बीपीएल जैसा इवेंट खेलते हैं एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है और मुनीब मुनाफ का एक्सपीरियंस आज सर चढ़ के बोला है। नासिर रसूल ने भी कुछ कम किया नहीं, 3 ओवर में मात्र 19 और 1 सफलता उनके नाम। हालांकि तीसरा ओवर वो 10 रनों का आया था, पहले 2 में खर्चे थे मात्र 9। ज़हूर ज़ोलो 14 गेंदें 24 और सलमान के खाते में 14 रन 6 गेंदों में। दोनों बल्लेबाज सुनिश्चित करते हुए कि यहां से कुछ बड़ा करना है इस आखिरी ओवर में और इस आखिरी ओवर की गेंदबाजी नासिर रसूल करेंगे। इस पहली पारी का यह आखिरी ओवर होगा, नासिर रसूल के कोटे का यह आखिरी ओवर होगा। सामने ज़हूर ज़ोलो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज, पहली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में कुछ अलग प्रकार से। पहले लगा शायद गेंद ऑन साइड में जा सकती है, लेकिन गेंद ने वो भीतरी किनारा छूकर ऑफ साइड की राह ली और 1 रन बनाने का वहां अवसर मिला बल्लेबाजों को। सलमान एक बार फिर से स्ट्राइक पर। सलमान हो या ज़ोलो हो, यहां बड़े स्ट्रोक्स खेलने ही खेलने हैं। सुल्तान वॉरियर्स के दिमाग में 170 जरूर होगा इरशाद भाई। अगर 170 के ऊपर चले गए तो उनके गेंदबाजों के पास फिर बचाने के लिए बहुत कुछ है, फिर कोई छोटा स्कोर नहीं है। बिजबिहारा प्रीमियर लीग के नीलंद्रुस में अगर आप 170 बनाते हैं, इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लिया है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन, डीप मिड विकेट पर नजीर टाइगर खड़े हैं और नजीर टाइगर से आज सिर्फ 1 ओवर करवाया है क्योंकि काफी महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर में 15 रन खर्चे थे। हालांकि एक तगड़े गेंदबाज हैं, एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, लेकिन आज उनकी कुछ चली रही। 19.2 के बाद मेरे ख्याल से कप्तान को 1 आध ओवर उनसे फिर लेना चाहिए था, लेकिन आज अहमद बांडे ने उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया है। 159 पे 6 कंट्रोल में नासिर रसूल इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों में। क्या अंत भला करेंगे? कहते हैं ना वो अंत भला तो सब भला। इस बार भी बढ़िया गेंद, लेकिन यहां किस्मत ने इस बार बल्लेबाज का साथ दिया है। किनारा लेती हुई गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। When you're bowling wide, when you're trying to bowl away from the radar of the batsman, you should have your third man on the boundary. Having third man up inside the ring, you're playing with fire. Outside edge, faintest of those edges, and finds its way. The wicketkeeper had nothing to do with that. That was always flying to the boundary. Nonetheless, these are handy runs. ज़हूर ज़ोलो 29 of 16. Nasir Rasool once more. This time, that ball pings off the blade of that batter ज़हूर ज़ोलो and finds its way into the boundary at deep mid wicket for 4. I was trying to bounce him up on that occasion, probably taking the pace of having a fielder at deep square leg. Now that was well read. Look at that. That one pings off that blade and finds its way into the boundary at square leg. Back-to-back boundaries. Now he has to finish well here. ज़हूर ज़ोलो gets a full toss and smacks it. Has he found the distance? He has. 4, 4, 6. ज़हूर ज़ोलो is on fire. 39 of 18. And Nasir Rasool is facing the brunt here. He tried to bowl a wide yorker. Took the edge, flew away to the boundary. He tried to bowl a slower ball into the pitch. That was spotted brilliantly by ज़हूर ज़ोलो and smacking it past square leg for 4. And now he tried to go full onto the base of the stump. He missed his length. Full toss was deposited over deep mid wicket for another 6. Final ball of the innings. Sultan Warriors Baramulla past 173. That's what they were looking for. They can go to 180 as well. Nasir Rasool. This time he goes offside with some real might and finds the boundary as well. 4, 4, 6, 4. 20 runs coming of the 4th over of Nasir Rasool. It means that Sultan Warriors Baramulla have closed their innings on a very high 177 for 6. ज़हूर ज़ोलो finishing with 43 of 19. What a finisher.
Sultan Warriors Baramulla have got a formidable score. It will be competitive as well. We will be getting a very good and a thrilling chase on our hands as and when elegant strikers will come out to chase. The scorecard: Owais Ahmed got nothing. One bold Saqib, Wasim Kachru scored a brilliant 39 with the help of 5 boundaries and 2 sixes. Asim Bashir struggled a lot, 36 of 36 with the help of a couple of sixes and a boundary. Jesse never got going, 10 of 12. Nadeem Dar tried to get going but failed, 14 of 12. It was Munib Munaf who's taking wickets. He was on a roll on that occasion, but then Nadeem Butt provided that impetus with a 13 of 7 balls with the help of 1 6 and 1 boundary, and Salman finished with 15, handy contribution, 15 of 7, but it was Zur Zolo who has been the star performer with a bat in hands, 43 of 19, 3 maximums and 3 boundaries, and Sultan Warriors Baramulla finishing at 177 with the bowlers. 6 of them used. Nasir Rasool 4 overs, 1 for 39. Saqib 3 overs, 1 for 29. Nazir Tiger bowling that solitary over, none for 15. Imtiaz Ahmed was expensive, none for 45 from his 4. Munib Munaf was exceptional, 3 for 25 from his 4. And for me, the bowler who gave real trouble to the batters and the standout bowler was Webao. 4 overs, no maidens, 1 for 19. This is the bowling card, and Sultan Warriors Baramulla have scored 177. 178 is going to be the target. And we have an announcement from the management of BCA that nobody should invade the field in these 10 minutes, which is the changing time between the 2 innings. So I hope everybody will comply, everybody will do what has been advised to them. Sultan Warriors Baramulla finishing at 177. Elegant strikers, they will be requiring 178 when they will come out to chase. We will join you in a matter of moments for the chase of elegant strikers, Srinagar.
I welcome you back with a chase of elegant strikers who require 178 runs from their 20 overs. Sultan Warriors Baramulla, they're all set. The two openers are out there in the middle. And it's all set for the chase to get underway. Ball number 1. Lofted, launched, it's up in the air. And it has gone for a maximum. What a start. First ball, bang out of the middle. Salman has been greeted by Ahmed Omar Bande. With a maximum. That is the start you need as a batter to get going. That was in the slot and treated equally by Ahmed Omar Bande. He's adjusting his field now. Mid-off goes out on the boundary. Mid-on is still inside the ring. First ball crunched and crunched beautifully in front of square for 4 more. Ahmed Omar Bande, well, he's seeing them like a football. Brilliant shot, rocks back onto the back foot. Saw that length early and pummels him in front of square for 4. A rollicking start already from elegant strikers. Salman. For the 3rd time, this time he gets it right. Was trying to work it away onto the onside. Gets that ball to move slightly outward. And as a result, all along the ground, the ball went onto the offside. Zurzolo fields, no run. None for 10 of his first 3. Ahmed Omar Bande is on strike. Next ball, once again. Has he got all of it? He has. That is the 2nd boundary of the over. The 3rd in total, apart from that maximum. That is one heck of a start from Ahmed Omar Bande. 14 of 4. 6 for 4. He's taken Salman to cleaners here. Fielding being readjusted. As a fielder at mid-wicket on the edge of the ring. That's a good delivery. Getting it into the block hole. He's trying to dig it out of the pads. The ball rolls along the ground. Down towards short 3rd man. It's another dot ball. So far 6-4. And to bowl the final delivery of his first. Salman. Ahmed Omar Bande. Slower ball. Gets it up the toes. Will pick up a single to finish over number 1. And it has started to drizzle here at Nilandrusu Cricket Stadium, Bijbehara. And the drizzle is picking up the speed as well. After the completion of 1, elegant strikers of 15 without loss. Abhishek Pathak. The umpires are having a word. And now it has picked up the speed as well. It's raining. This is not a good news. But the umpires somehow have told the players to continue. Will be Nadeem Bhatt to bowl from the far end of the ground. And on strike will be Ahmed Omar Bande, who has got a very good start. Abhishek Pathak, the other opener, is an outside player. One of those 3 which every team is permitted to have in their combination. Fine leg inside the ring. Mid-on
inside the ring as well. Long off on the boundary. And there is a deep mid-wicket on the boundary. Those are the two fielders allowed outside the ring. It has drizzled and it's now drizzling harder. And the umpires have told the players to go to their respective dugouts. The stumps have been uprooted. So there is a slight delay in the game. This is not good news. The rain has to stay away for us to have a complete game here at Nilendrus Cricket Stadium, Bijbehara. It was the opening game. So for one innings and 1 over has been bowled and the covers are coming onto the field. We are having good arrangements here in place. BCA has done an exceeding job of having those facilities and all those bases covered up. Here comes the big cover that's going to cover the entire pitch area. Is being dragged by the groundsman. The groundsmen too are aware to the occasion. As soon as it rained, as soon as it started to drizzle, they were ready with that big cover. Ahmad Omar Bande, what a start he had. 15 from 6. Now they need 163 from 114. It's a rain delay with the latest update coming from Nilendrus Cricket Stadium here in Bijbehara. The two umpires are having a conversation with the other batter who hasn't left. It's Abhishek Pathak and the pitch is being covered. Probably it might be a passing shower. So we might not be there for a bigger delay. It will be a short delay, but that bigger, huge cover is now coming onto the pitch. These are not good signs, but we hope here that it is a passing shower and it goes away as soon as possible and we will start the game without losing any overs. Right now it's raining. We will be back with the latest update on the official YouTube channel of State Sports Live, official Facebook page of Bijbehara Premier League and the official YouTube channel of Bijbehara Premier League. Stay tuned.
So, welcome back, everyone. We are having an update. The covers have been taken off, and the stumps are going to be back in place. The rain has cleared. Good news for every viewer and for every spectator who is at Narendra Cricket Stadium. And the game is going to be resumed in a short while from now. Elegant strikers prior to that rain delay were 15 for none of that first over, in which their opener, the captain Ahmed Umar Bande, went berserk with a 6 and couple of boundaries. A team of Sultan Warriors Baramulla have made their entry into the middle. The two umpires are also going to their respective places, and we're waiting for the two batters to come so that their game is resumed. It was a short delay, probably a passing shot, and now Ahmed Umar Bande and Abhishek Pathak will be strolling out into the middle. 15 for the loss of 1 wicket. Nadeem, as soon as he introduced himself into the attack, the rain came. And now everything is in readiness. We are a couple of minutes away from the start. And I have got my fellow commentator and friend here, Zahid Bhai, talking about the game so far. 177. Well, it's a competitive total on this pitch, and keeping in view the dimensions of the ground, straight down the ground or towards the square. But the start that Ahmed Umar Bande has made, and the way Salman has bowled, he was way too short. And the first ball was pitched up, and afterwards he came up with short stop and he was belted for 15 runs in his first over. So the intentions are quite clear. The two openers, they're going to make hay in the first 6 overs of the power play, and then they're going to consolidate, because Ahmed Umar Bande, as we know, he's got shots. He can consolidate an innings, and then they're going to chase this in patches, not taking it as a whole. I think the intention of the two openers was right. बिल्कुल इरशाद भाई, यहाँ से जो शुरुआत अहमद उमर बांडे ने दिलवा दी है टीम को, शुरुआत से ही वो कुछ बड़ा करने की फिराक में दिखे और कामयाबी रहे। 6 ओवर का पावर प्ले अगर वो पूरा खेल जाते हैं तो वो पूरा डोमिनेट करेंगे इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से। अहमद बांडे एक बड़ा नाम और एक विश्वसनीय बल्लेबाज, टीम के कप्तान, फ्रंट से लीड करते हुए एलिगेंट स्ट्राइकर्स को। 1 ओवर की समाप्ति में 15 रन्स बन चुके हैं। हालांकि बारिश की वजह से बाधा आई थी इस मुकाबले में, लेकिन अब पूरी तरीके से कवर्स हटा गए हैं। मैच दोबारा शुरू होता हुआ और गेंदबाजी के मोर्चे पे नदीम भट्ट आपको दिखेंगे। सामना उनका करना होगा अहमद बांडे को। अभिषेक पाठक ने भी कोई गेंद खेली नहीं, उनका रोल भी काफी तगड़ा रहने वाला है इस मुकाबले में। 177 रन्स बनाए थे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने, और 178 रन का टारगेट हालांकि नहीं आसान रहेगा इस विकेट पर। अहमद बांडे शुरुआत से ही वो दबाव जरूर डालने की कोशिश गेंदबाजों के ऊपर। मुकाबले के दूसरे ओवर की शुरुआत, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, ड्राइव किया गेंद को और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर की शुरुआत भी एक बड़े स्ट्रोक से और अहमद बांडे नॉन स्ट्राइकिंग तौर पे, हालांकि अभिषेक पाठक के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। पहली ही गेंद पे ऑफ द मार्क, खाता खुला अभिषेक पाठक का। 19 बिना किसी नुकसान के एक धुआंधार शुरुआत। इस बार भी आगे की गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, एक और चौका। पहले लगा शायद वहां फील्डर है, लेकिन वो काफी वाइड थे, मिड ऑफ पे थे और आगे की गेंद को सही पिक किया, सही नसीहत। स्लोवर ट्राई किया था इस बार गेंदबाज नदीम भट्ट ने
और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस बार भी हल्के हाथों से खेलकर गेंद को पहुंचाया वाइडिश लॉन्ग ऑफ दिशा में 1 रन के लिए। हालांकि गेंदबाजों की अगर हम बात करें, सुल्तान के पास एक अच्छा गेंदबाजी विश्लेषण, हालांकि नदीम भट्ट तो थोड़े महंगे यहां साबित हो रहे हैं। पहले ओवर में सलमान महंगे हुए, लेकिन इनके पास स्पिन का कोटा जो रहेगा। हमने पिछले साल देखा है आसिम बशीर ने काफी खतरनाक गेंदबाजी की थी, काफी वो जो विकेट टेकिंग गेंदबाज रहे हैं वो पिछले साल के, अगर हम पूरे गेंदबाजों की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स। एक मैच में 5 भी उन्होंने लिया था और उनका स्पिन गेंदबाजी काफी तगड़ा रहने वाला है। उसके साथ साथ कप्तान नदीम डार, समरजीत एक बढ़िया गेंदबाज है इस टीम के। This has been a rollicking start from the openers of elegant strikers. Abhishek Pathak is off the mark with 1. Ahmed Umar Bande has been severe. So far, he has struck some brilliant shots. 24 of 9 is now on strike. Ahmed Umar Bande goes down the ground. That's a lovely shot. The fielder in pursuit will not be able to stop that. That's another boundary. It's raining boundaries here at Nilendrus Cricket Stadium. Another pitch top delivery. Played on the up. Straight down the ground. Beautifully played. And that is a straight drive, giving him maximum result. This is the 3rd boundary of the over. Ahmed Umar Bande. He has started from where he left before the rain came. After the rain, he hasn't looked back. That's where he started. It's where he left. He had left before the game, before the rain delay. And when the game resumed, his boundary hitting resumed as well. Nadeem Bhatt is looking under some pump here for the final time. Comes forward, knocks it towards the offside. Game awareness. Since the fielder was deep on the longer boundary, the batsman had that privilege and enough time to amble across for one more. 2 overs done. And what a start this has been from elegant strikers. They are 30 without loss. And talking about Sultan Warriors Baramulla, that rain shower might not help their cause because the ball is wet. They've got quality spinners in their lineup, but the ball, whenever it goes into the deep, it will be wet, and to grip that wet ball, it is not easy, and the ball will skid onto the bat. So it is a win-win situation for both the batters, and Sultan Warriors Baramulla bowlers, they have to work very hard for every wicket and to stop scoring rate, which is going at a brisk pace at this stage. Abhishek Pathak has faced only 1, and Ahmed Umar Bande has faced 11 of the remaining 2 overs. And he's raced up to 29, and none of the strokes was an ugly one. It was normal cricket, normal cricketing shots, copybook style, and he has picked out plenty so far. So there is a bowling change. It's an induced bowling change. Summer has been brought into the attack. So left arm spin introduction earlier on. And let's see, Ahmed Umar Bande is a very good batsman against spin as well. What he is up to. The ball will not be able to grip by the bowlers. So Summer has got a challenge. He's got a slip in play. Wicketkeeper glued to the stumps, between the umpire and the stumps. Over number 3rd. Flights this one. Goes inside out. And goes inside out firmly. Same result. A boundary to start the over. Ahmed Umar Bande is not looking back. He has taken this game. He's grabbed this game by the scruff of its neck. He's leading from the front. Flighted delivery. Thank you very much. The field was in. All he had to do was to clear the infield and get a boundary. Second time in this over. This time he cuts it, finds the fielder. That's a rare dot ball. Summer has to be very careful. He bowls short. He will pulverize him over the infield. He bowls fuller. He will go down the ground.
He has to search for that in-between length as a spinner. Subtle change of variations and subtle change in that length as well. Next ball, he goes downtown, he goes hard, he goes high, and that's gone into the crowd for 6 more. No stopping Ahmad Umar Bande, 39-14. Goodness gracious me. Summer was trying to bowl short. He was getting cut. He was trying to bowl fuller. He was belted down the ground. Poor bowler. What's he got now? What a shot that one was. The back lift. The strong base. And goes through the shot. For a huge 6. The next ball, it's well fielded. But Ahmad Umar Bande picks up a single to move himself to 40 of 15. And Elegant Strikers have raced to 41 without loss, with 2 more balls remaining in the 3rd over. This is a start which I think they might not have dreamt of. Is unable to beat that fielder inside the ring at mid-on, Abhishek Pathak. He too was trying to join the party. It's a dot ball. It's a rare dot ball. So far, 11 runs coming up this over. Slip. Still there in play. Summer. Can he be able to pick up a wicket here? Good delivery. Runs the ball down towards the 3rd man boundary. No stopping, no respite. 4 more. Another expensive over. 15 coming up that. And Abhishek Pathak. Delicacy. The deft touch. Using the pace. Picking up a boundary. 3 done. Scoring at a rate of 15 runs an over. At a rate of knots. Elegant Strikers have knocked off 45 in the initial 3 overs. Now they need 133 from 102. This is a dream start. जी हाँ बिल्कुल इरशाद भाई, जहाँ तक सवाल है 3 ओवर के खात्मे के बाद 45 और अभी भी जीत के लिए शेष 133 रन, 102 गेंदें शेष। और अभिषेक पाठक 3 गेंदों का सामना किया है और 5 रन उनके खाते में। और अहमद उमर बांडे क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए 15 गेंदों का सामना किया और 40 उनके खाते में। दबाव साफ है इस समय गेंदबाजी क्रम पे। और जिस तरीके से पहले 2 ओवर्स तेज गति के गेंदबाजों ने किए थे अब तक, लेकिन वहां महंगे साबित हुए और फौरन वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिन को लाया गया, इनिशिएट किया गया इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि यहां से अहमद उमर बांडे की विकेट मिलेगी। लेकिन इस समय पूरे नियंत्रण में है बल्लेबाज, कंट्रोल में किए हुए हैं इस पावर प्ले के ओवर्स में, क्योंकि जानते हैं पावर प्ले के ओवर्स में ज्यादा रन बटोरेंगे तो आसानी रहेगी। जो मध्य क्रम के बल्लेबाज आने वाले हैं उनके लिए काम आसान करना जानते हैं अहमद उमर बांडे। और फिलहाल की कहानी, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पहली विकेट की तलाश में, गेंदबाजी में फिर से बदलाव। और यहां पे बढ़िया गेंद लेग स्टंप और मिडल स्टंप की सीम में ये टिप्पा खाती हुई गेंद उसको डिफ्लेक्ट किया बिना किसी रन के। और टीम का अभी भी कुल स्कोर 45, 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और जो मौजूदा रन रेट है 14.21। और यहां से वो रन बॉल खेलने का प्लान, क्योंकि सर्कल्स के ओवर में जो दबाव चाहिए था, जो स्टार्ट चाहिए थी, जो शुरुआत चाहिए थी, वो मिलती हुई। एक बार फिर छोटी गेंद उसको डिफ्लेक्ट किया डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के पास। और तब तक जाके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर 46 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और सलमान पहला ओवर काफी महंगा घटा है इनका और अब तक एक अच्छी वापसी। 1 रन इस ओवर में खर्चा है, लेकिन 4 गेंदें शेष। और किस तरीके से ये 4 गेंदें आनी होगी। और अब तक देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्लोवर वन का ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। क्या वो थोड़ा सा वो आगे जो मिडल स्टंप वाली जो लेंथ है वहां पे अगर आप वो टिप्पा, अगर आपके पास वो स्विंग है तो वहां आपको टिप्पा खिलाना था। लेकिन इस तरीके से फिलहाल की जो कहानी है, बिल्कुल वो स्विंग नहीं मिल रहा है अभी तक गेंदबाजों को, वो ग्रिप नहीं मिल रहा है गेंदबाजी पे। चाहे आप तेज गति के गेंदबाजों की बात करें या लेफ्ट आर्म स्पिन की बात करें,
अभी तक तो बिल्कुल वो जो शरीर भाषा जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल धीमी दिखती हुई, और लगातार यहां सिंगल्स से डील करते हुए सलमान अब तक अच्छा ओवर 47 बिना किसी नुकसान के 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और शायद ही किसी ने सोचा था कि जो दूसरी इनिंग आने वाली है रन चेज में ये धुएंधार पारी देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्कल्स में अब तक जो है अपना लोहा मनवाया है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने, और 131 रनों की दरकार, और यहां से केवल आपको विकेट सी इस मुकाबले में ला सकती है। ये ऐसा विकेट है जहां पे आप को नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ये बढ़िया गेंद यहां पे कटर का इस्तेमाल किया था। जानते हैं कि बल्लेबाज जो हैं इस समय वो 5वें गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहां से वो अवसर बनाने की कोशिश, वो विकेट, पहली विकेट की तलाश लगातार जारी। अहमद उमर भांडे 17 गेंदें खेलकर 41 रन बना के नाबाद। अभिषेक पाठक बिल्कुल उनका बल्ला अभी तक खामोश, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 18 गेंदें 42 रन। सलमान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर बल्ला चलाया है और वहां पे बढ़िया फील्डिंग। क्या दूसरे की मांग करेंगे? जी नहीं, सही समय पे वहां पे गेंद को फील्ड किया और सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। और जब आप बड़े मुकाबलों में खेलते हैं तो आपको ये रन्स बचाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और फिलहाल ओवर की समाप्ति 4 के बाद 49 बिना किसी नुकसान पे। तो यहां पे मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर से जानना चाहूंगा कि किस तरीके की रणनीति रचानी होगी, क्योंकि आपने तेज गति के गेंदबाजों का भी प्रयोग किया है अब तक, लेफ्ट आर्म स्पिन का भी इनिशिएट किया गया। क्या आसिम बशीर का आना यहां पे लाजमी बनता है? No, it's early to say Asim Bashir, the introduction of Asim Bashir, because he would like to flight the ball. Fielding restrictions applying. Ahmed Umar Bande is too smart, and Abhishek Pathak, we have seen, he likes to just use the pace of the ball. But Ahmed Umar Bande against the leg spinner particularly will use that inside out stroke to play for boundaries. He's looking very dangerous at the moment. All they have to do is to just restrict these two batters, is to try the boundaries at least. Restrict them from scoring freely. And Nadeem Dar comes into the bowling attack. And he's a very good option because he would like to bowl wicket to wicket. And he likes to hit that block hole as well. So earlier on, introduction of a right arm off spin now. It was left arm spin earlier on, who's belted for runs. Now he goes down the ground. That's a sweet connection. And that's a boundary to start over number 5 as well. 50 comes up for elegant strikers. Abhishek Pathak, look at that. He hits that one with disdain. Oh, beautifully played over the infield. And the ball races away to the boundary. It's another good start into the double figures on 11 now. Elegant strikers are off to a dream start in the chase. Next ball turns it away. That's good cricket. Wasim Kachru has a shy at the non-strikers and misses. A single pinched takes the total to 54 for none. Run rate at the moment is 12.46. Required run rate has come down to 7.91. That's the decline that you see. Next ball, good delivery. The respect has been given since the mid-on fielder has been pushed to long on. The batsman has enough time to amble across for one more. Ahmed Umar Bande has got the start, 43 of 19. And now is the time to consolidate the innings and convert this into a big one. Because you got a call up from the state side as well. So he might look to convert this one into a big one. This has gone up in the air. Fielder underneath takes the catch. Zuhur Zolo. And Nadeem Dar strikes. The partnership has been broken. It might be Abhishek Pathak. But nonetheless, this opening pair has been dislodged. 55 for 1. And Nadeem Dar's golden arm has got them a wicket between the umpire and the stumps. Bowl this one slower through the air.
The batsman was looking to go inside out, and leading edge high up in the air, easy catch, and wicket number 1 for Sultan Warriors Baramulla. Ahmed Umar Bande, talking about the innings so far, has been laced with some cricketing shots. The shot that he played on the very first ball of the innings, straight down the ground, was a brilliant shot, hitting that 6. And the next boundaries to follow, they were disdainful. No mercy shown. And the new man in is Umar Nisar at number 3. Umar Nisar, right-handed batsman, has got a good legacy of occupying the crease and scoring runs quickly at a brisk pace. Might not be a dasher with a bat in hands, but his skill with the bat earns him a reputation of being the wall for this side, Umar Nisar. That's why he's there at number 3. So for 6 runs and a wicket, 2 more balls to come. This is the 5th over of the power play. The restrictions still applying. Slip in play for the right-hander. Umar Nisar, here is the next ball. Good delivery. On the stumps, shy at the non-strikers and hits the stumps. As Ahmed Umar Bande was looking to go for a single. And now the single is on. Probably they might be going back for 2. Umar Nisar is underway with a couple. And Sultan Warriors Baramulla might have picked up a wicket. But now another partnership. Umar Nisar, this is the exact delivery at which he picked up a wicket. The wicket of Abhishek Pathak. So 5 overs completed. And it's 55 for the loss of 1 wicket. Elegant strikers. थोड़ी सी राहत की सांस सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने ली है वो विकेट हासिल करके। 5वें ओवर में कप्तान ने वो विकेट दिला दिए और 55 1 विकेट के नुकसान पे। रन आउट की वहां कॉल थी, डायरेक्ट लगा था आतिफ गुलजार का वो थ्रो स्टंप पे लगा था और रिव्यू मांगा है यहां स्केलिंग अंपायर ने। तो नॉट आउट का यहां से इशारा आया है और अहमद बांडे सर्वाइव करेंगे। 43 पे नाबाद है 19 गेंदों से। उमर निसार 2 रन बनाकर पहली गेंद पर ऑफ द मार्क। नदीम डार का ये पहला ओवर। 8 रन खर्चे हैं इस ओवर में 5 गेंद में, लेकिन वो विकेट जिसकी काफी समय से तलाश थी। 4 ओवर में काफी तगड़ी और काफी तेज बल्लेबाजी की है अहमद बांडे ने। कमाल की बल्लेबाजी। 43 पे नाबाद है वो 19 गेंदों से और शुरुआत से ही प्रहार करने के लिए आए थे और अभी तक कर रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। और यहां से दिमाग में जरूर रहेगा अहमद की विकेट। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ दिशा में और तेजी के साथ 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की समाप्ति 58 पे 1 और कंट्रोल के साथ साथ डोमिनेट करती हुई इस मुकाबले को एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी। स्पेशली अगर हम अहमद बांडे की बात करें, 19 गेंदों में 43 रन बनाकर वो नाबाद हैं। कप्तान लीड कर रहे हैं फ्रंट से। बिजबिहारा प्रीमियर लीग पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला और आमने सामने सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और एलिगेंट स्ट्राइकर्स श्रीनगर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था आज सुल्तान के कप्तान ने।
शुरुआत थोड़ी सी हड़बड़ाहट के साथ, बीच में कुछ रन्स अच्छे बने और एंड काफी अच्छा करवाया ज़हूर जोलो नदीम भट्ट ने। उसके साथ सलमान ने भी कुछ आतिशबाजी दिखाई थी और ऐसे तैसे 177 तक पहुंची थी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की वो पारी, पहली पारी में। और उनकी जो इनिंग्स है, उनके जो रन्स है 177 रन्स और 178 रनों का टारगेट। हालांकि हमने वो इनिंग्स के बाद कहा था शायद चैलेंज रहेगा, काफी मुश्किल रहेगा एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति इस समय उनके पक्ष में जा रहा है। 43 पे उमर, और उमर निसार की बात करें तो 3 पे नाबाद हैं वो। सलमान 2 ओवर 19 अपना तीसरा लेकर आए हैं। दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करेंगे और सामने फिर से उमर निसार। सलमान थोड़े से महंगे, 2 ओवर में 19 रन, कोई विकेट नहीं। इस ओवर की पहली गेंद अंदर आती हुई, हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड में खेला। मिड ऑन से जब तक खिलाड़ी जाते हैं 1 रन आसानी से मिल जाएगा। आसिम बशीर थे वहां पर, आसिम बशीर को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है और मेरे ख्याल से गेंद को थोड़ा सा पुराना होने देना है यहाँ कप्तान को, तब जाकर आसिम को वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस पुराने गेंद से वो बल्लेबाजों को चकमा दे पाए, क्योंकि काफी फ्लाइट देते हैं गेंद में और बल्लेबाजों को वो उकसा सकते हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए। और डायमेंशंस वैसे भी काफी बड़ी हैं, तो यहाँ कैच आउट का वो जो खतरा रहता है आसिम बशीर की गेंदबाजी में। अगली गेंद इस बार भी बैकफुट पे जाकर अंदर आती हुई गेंद को ऑन साइड में धकेला। एक अच्छे लेंथ पे दोनों गेंदें देखने को मिली है सलमान की। एक युवा गेंदबाज जिन्होंने काफी कारनामे किए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। 60 पे 5.2 के बाद और बिजबिहारा प्रीमियर लीग के इस सफर की आज शुरुआत हुई है। पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला, एलिगेंट स्ट्राइकर्स बनाम सुल्तान वॉरियर्स। और आप सुपर फैन बन सकते हैं बिजबिहारा प्रीमियर लीग के। इस बार अपिश खेला है मिड ऑन के ऊपर से, पीछे खिलाड़ी नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल, सही पिक किया इस बार बल्लेबाज ने। तैयार थे, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर और लेग कटर के अंदाज में उंगलियां फेरी थी इस बार सलमान ने, लेकिन उसका लाभ लिया उमर निसार ने। एक बढ़िया शॉट, उनका पहला चौका। स्कोर 64, 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद एक पावर प्ले, वो आतिशबाजी देखने को मिली है इस पावर प्ले में। सलमान वापसी करने की लगातार कोशिश करते हुए इस बार भी अंदर आती हुई गेंद। थोड़ा सा घुमाव जरूर देखने को मिल रहा है सलमान की गेंद में, काफी अंदर ला रहे हैं गेंद को, लेकिन बल्लेबाज ने आपको पढ़ लिया है। आप अमूमन आप लगातार एक ही टिप्पे पे जब अंदर गेंद को लाएंगे, बल्लेबाज वहां ऐसी तमाशा देखने नहीं बैठा है। वो पढ़ चुका है आपकी लाइन को, वो पढ़ चुका है आप किस प्रकार से गेंद डाल रहे हैं और तैयार रहते हैं वो लगातार आपके सामने उस वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए। सलमान की अगली गेंद इस बार भी अंदर आई, उतनी ज्यादा उछली नहीं, तिरछे बल्ले से धकेला गेंद को। कवर पे ज़हूर जोलो खड़े, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद। चौसठ 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी, इस बार घूमकर खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका। समय मिला वहां उमर निसार को और हल्के हाथों से ही जरूर खेला, लेकिन टाइम बढ़िया किया था बल्ले के बीचों बीच और गैप में गेंद। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में वो खिलाड़ी, लेकिन उनके पास समय था नहीं गेंद को रोकने का और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले में 68, सिर्फ 1 विकेट। ये मुकाबला मेरे ख्याल से, हालांकि अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या एलिगेंट स्ट्राइकर्स पंजा मारने वाली है इस मुकाबले में? Absolutely, the strong start at the top of the order with Ahmed Umar Bande 44 of 20 and Umar Nisar. Look at him. He has played some gorgeous strokes. The bowler trying to pitch one up, he goes down the ground. The bowler trying to dart the ball in towards his rib cage. He goes across the line and picks up another boundary. And the outfield, well, it's helping the cause. The ball is speeding away because of that rain delay. It's not helping the cause of Sultan Warriors Baramulla. But a couple of wickets, dislodging of this partnership, and particularly the wicket of Ahmed Umar Bande, who knows, they can make a game out of it. Nadeem Dar is that lone warrior, has picked up a wicket so far, 1 for 9 in his first. Ahmed Umar Bande is on strike.
using a bat that is heavily tapped. Heavily taped, but the way he's tapping the bat at the crease and playing strokes with ease is looking in supreme form. Another single down the ground. Takes him to 45 of 21. Umar Nisar is on strike. Look at the crowd in absolute numbers here. Towards the right, left, despite that rain delay, not a single individual has left. This is the interest and this is the aura of BPL. TCI Max presenting this year's BPL Edition 5. Next delivery from Nadeem Dar. He's bowling well, taking the pace off and letting the batsmen make their own pace. But since the start is a sparkling one and they have already knocked up 68 from the first 6, now they can afford to play some dot balls as well. Once again, whipped away onto the onside. Should look to come back for 2. Good running between the stumps. Good game awareness. That is the experience of playing the highest level of cricket. Ahmed Umar Bande has played the state. He has played county cricket as well. So he has got plenty of experience. And he is a muscular guy. Look at the biceps. Sweetly struck. Man back on the boundary. Fumbles. Batsmen are restricted to just 1. So far, 3 singles and a couple. Brings Umar Nisar back on strike. And Nadeem Dar to Umar Nisar has boundary fielders. Long on, long off, deep mid-wicket. And a fielder sweeping on the offside on the cover boundary. Shortens the length. Is not able to pierce the gap. Straight to Zur Zolo. It's a dot ball. Nadeem Dar every now and then changing and chopping the field. He's trying to buy a wicket here. Nicely played. Nicely judged. Single taken to finish over number 7. Elegant strikers in total command. A 74 for 1. What a spectacular start this has been for elegant strikers Srinagar. Scoring 74 in the 7 runs, running at 10 runs per over. Ahmed Bande and Umar Nisar, they are totally in control, totally in charge at the point. The way they are batting, they are showing no mercy to the bowlers. It's an absolute carnage for the bowlers out there. And what a game and what a day we are witnessing. Elegant strikers just rushing through at the point. Ahmed Bande scored 48 of 23, whereas Umar Nisar is batting on 14, playing a handy knock for his team. Can they transfer this inning into a winning cause? This will be the question asked. But at the same time, Sultan Warriors Baramulla, they badly need a wicket here. They badly need to break this partnership to get back into the game. And for that purpose, they have brought their left-arm orthodox bowler again into the attack. It's Summer who is going to bowl. They badly need a wicket. Can they struck a wicket here? Umar Nisar tries to cut this one. Slight fumble in the field will result in a single. And now will be on strike Ahmed Umar Bande, who is batting on 48, just 2 runs short of his half century. The way he has batted today, he is showing his class, his temperament, and how amazing he is as a cricketer. Irshad Bhai was talking about his maturity level and the confidence he has because he has played cricket at a very high level. Straight back to the bowler, no run at this occasion. They're just building a partnership from here because they are pacing at 10 runs per over. And at this point of time, they need 103 in the remaining 76 balls. If Umar Nisar and Ahmed Bande keeps going, this will be an easy chase. He goes big. Fielder coming under it and he takes it. Commentators curse. This is what I was talking about. Maybe they will get a wicket and they does. Summer getting the important wicket of Ahmed Bande, and can this be the turning point of the game?
This will be the question asked to my fellow commentator Irshad Bhai. Can this change the tables around? Yes, absolutely. Ahmed Umar Bande was batting so well, 48 of 24, might not have picked that fielder and picks him up with ease this time, straight into the hands of Salman, whom he had taken to cleaners in his first over. Once again, this time Sama just changing his line a little bit, bowling it outside his arc and slowing it a little bit as well. An extra cover boundary was being guarded by Salman, who took an outstanding catch. It was straight into his hands, but since Ahmed Umar Bande was hitting the ball so cleanly, he's gone for 48, and this might be the change of fortunes for Sultan Warriors Baramulla. Summer strikes and strikes big. Summer, one of those outside state players. Any side can have 3 of them. Omar Nisar is still there on 15. Sultan Warriors, they need wickets in clumps. 103 from 75. Wasim Kachru, Nadeem Dar, they have been animated in directing traffic behind the stumps. Nadeem Dar directing traffic from his position at mid-wicket and using his bowlers to a very good effect so far. Although the first couple of overs went for plenty, then he himself came on to bowl, picked up a wicket, and then Summer came up and he too picked up a wicket. The new man in, walking to the middle, is Owais Shah, one of the promising young all-rounders. And it surprises me that he wasn't given a ball today. He's an enterprising young all-rounder. He too has played state. Left-hander. Hunt for runs. He too tries to occupy the crease. Will not give his wicket away and try to score runs at a brisk pace. Owais Shah is taking guard, and that's a good strategy. The matchup might work in his favour because left-arm spinner bowling to left-hander will bowl that one in his arc, and that will be easy for him. But the boundary towards his arm side is much bigger, so it will take some effort to clear that boundary. On the leg side, Summer to bowl for the 4th time to Owais Shah. Bowls to Owais Shah. Owais Shah turns this one off the pads. First runs for him. We'll wait for the umpire's signal. And here is the dismissal of Umar Bande once again. Too wide outside the off stump. Not getting the connection he was after. And a straightforward catch to the fielder at deep X to cover boundary. Owais Shah is off the mark. And now Omar Nisar is on strike. Long on, long off, deep mid-wicket since the field restrictions are over between the umpire and the stumps. To Omar Nisar. Omar Nisar launches this one down the ground. Has he got the distance? I bet he has. That's into the crowd. That's like a parabola. Straight down the ground. Beautifully connected. And it's a long hit. What a shot that is. Maximum. Taking the attack back to the bowler and hitting him for a gigantic 6. That's a beautiful shot. This time he goes down the ground, but all along the ground, man back on the boundary. We'll limit the scoring to just 1. So after the completion of 8, it's 77 for the loss of 2. 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज में, और हालांकि कुछ समय बिताया है उमर निसार ने क्रीज में. वो छक्का काफ़ी लंबा था, काफ़ी दूर था और काफ़ी मज़ेदार भी था. क्या आवाज़ आई थी वहाँ बल्ले और गेंद जब आपस में टकराए.
8वें ओवर की समाप्ति, 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां से रास्ता काफी आसान है एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। 72 गेंदों में अब ज्यादा रन चाहिए नहीं, 12 ओवर बचे हैं। अंपायर्स और स्टंप्स के बीच में से राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए आज नदीम डार कुछ अलग अंदाज में दिखे गेंदबाजी करते हुए, और काफी समय तक उन्होंने वो ऑफ कटर्स का इस्तेमाल किया है, काफी बार हमने आज देखा। और आज ज्यादा फ्लाइट उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली नहीं, लगातार प्लानिंग के हिसाब से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, छोटी गेंदों से सरप्राइज किया बल्लेबाजों को आज बायां हाथ के ओवैस शाह, एक बड़ा नाम। और देखना होगा आज बड़ा नाम कितना बड़ा काम करेगा। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए यहां पर मुश्किलात बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। 71 गेंद में 94, कोई मुश्किल काम होगा नहीं। इस बार अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला गेंद को, जब तक शॉट एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को रोका जाता। 1 रन तेजी से पूरा किया, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स एलिगेंट स्ट्राइकर्स की आज बेहतरीन देखने को मिली है। उन्होंने चांसेस लिए हैं रन्स भागने के, 1 को 2, 2 को 3 में कन्वर्ट करना। आज उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस चीज में, इस काम को लगातार बखूबी निभाते हुए। इस बार भी दाएं हाथ से राउंड द स्टंप्स उमर निसार के लिए पैड लाइन पर गेंद लेग स्टंप से थोड़ी बाहर पीछ होती हुई, हल्के हाथों से ऑन साइड में देखिए। समय जरूर ले रहे हैं अब दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं विकेट अभी अभी गिरी है, तो थोड़ा समय यहां पे लिया जा सकता है फिर से एक और पार्टनरशिप सेट करने के लिए। 86 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आप बिजबिहारा प्रीमियर लीग के सुपर फैन बन सकते हैं। इस लाइव कवरेज को आप शेयर करके 5 अपने दोस्तों को फेसबुक पर टैग कर सकते हैं। उसके बाद आपको बिजबिहारा प्रीमियर लीग की एक कस्टमाइज्ड प्रीमियम कैप हासिल करने का मौका मिलेगा। और मुकाबले के बिल्कुल फौरन बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उस कैप से आपको नवाजा जाएगा। वो कैप सजेगी आपके सर पे, लेकिन उसके लिए आपको बिजबिहारा प्रीमियर लीग के ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा, बिजबिहारा प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करना होगा। लेकिन साथ में अपने 5 फ्रेंड्स को आपको टैग करना होगा, और आप मौका हासिल कर सकते हैं बीपीएल सुपर फैन बनने का। TCI मैक्स प्रेजेंट्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 5। और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, हालांकि पीछा जरूर किया था, कट करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज उमर निसार। 16 गेंद में 24, 150 का स्ट्राइक रेट, खामोश वो भी नहीं रहे आज। और जिस तरीके से उन्होंने भी चार्ज संभाला है जब से आए हैं। और अभिषेक पाठक के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पे आए हैं उमर निसार, अभी भी नाबाद हैं वो। इस बार आगे की गेंद ड्राइव कर दिया सीधे बल्ले से, हालांकि कारपेट के सहारे गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आसिम बशीर काफी आगे है गेंद को रोकने के लिए, और चांस नहीं लेना होगा यहां पर गेंदबाजों को। वो कोई भी एक्सपेरिमेंट इस समय पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप्स क्रिएट हो रही है, पार्टनरशिप्स बन रही है, और इक्वेशन अब उतना मुश्किल भी नहीं, उतना टफ भी नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट भी उतना ज्यादा नहीं है, 66 गेंदें 90 रन, 8 के आसपास का स्ट्राइक वो जो रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा। और जब आपके पास 8 विकेटें हो, जब आपके पास वो बैटिंग लाइनअप हो, तो निश्चित तौर पर आपको यहां परेशान होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। 9 के बाद 88 गेंदबाजी में एक बदलाव, और अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल किया है आजिम रॉथर। काफी समय तक वो गेंदबाजी में दिखे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब यहां से उनके 4 ओवर कंटिन्यू चलने वाले हैं। 10, 12, 14, 16 ये जो 4 ओवर यहां से डाल सकते हैं आजिम रॉथर। आजिम लेफ्टी, द बांडीपोरा बॉय। सुल्तान के पिछले मुकाबले में जब गुडविल के साथ वो भिड़े थे, हीरो बने थे उस मुकाबले के आजिम रॉथर, और आज देखना होगा क्या यहां से भी वो उसी प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं। 9 ओवर 88 पे 2, 66 गेंदों में अभी भी लगभग आधे रन चाहिए। 90 रन 66 गेंदों में, एक आसान सा यहां से मौका मिल सकता है बल्लेबाजी टीम को। शॉर्ट ऑफ एंगल गेंद से शुरुआत, ऑफ स्टंप से बाहर स्लैश किया गेंद को, शॉर्ट टूर्नामेंट पर खिलाड़ी समर्थ है वहां 1 रन बनाने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिजबिहारा प्रीमियर लीग सीजन 5 और इनॉग्रल मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम एलिगेंट स्ट्राइकर्स, और टॉस जीतकर यहां आज बल्लेबाजी का फैसला किया था। इस बार हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, ऑन साइड में गेंद को खेला ओवैस ने, गेंद हवा में काफी देर, और लीजिए एक और विकेट। सलमान ने लपका है एक और कमाल का कैच,
कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे वहां, और उवैस शाह की एक छोटी और निराशाजनक पारी समाप्त हुई। 4 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर एक खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है। तीसरा झटका लगा यहां एलिगेंट्स स्ट्राइकर्स श्रीनगर को। आजिम रथर, जिनके बारे में चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, ये ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं टीम के। वाइड रखा, उनसे दूर रखा, मजबूर किया वो ड्रैग करने के लिए, और उतना ज्यादा ना तो एलिवेशन मिला ना ही डिस्टेंस, और गेंद सीधे डीप मिड ऑन पर सुरक्षित हाथों में। सलमान ने लपका एक और कैच। 89 पे गिरी तीसरी विकेट 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर। Sultan Warriors Baramulla, they are back into the game. This is the cricket, this is the game of glorious uncertainties. They lost Ahmed Bande and now they lost Uwais Shah also without scoring anything much on the board. 89 runs, and somehow they are definitely back in the game. Sultan Warriors Baramulla. If they take another wicket here, then definitely elegant strikers will be on back foot, and at the same time elegant strikers definitely they will want a partnership here. They are losing wickets continuously, and Azim Rathar came and Azim Rathar delivered at the right time. Definitely Azim Rathar came and Azim Rathar delivered at the right point of time. Turnover of events. They have got a wicket again. They need another one. This game is not for the weak-hearted. This is turning out to be an extreme thriller of a game, an extreme gem of a game. Current run rate is at 9.54, well as required run rate it's 8.94. Not that much, but definitely they will need to keep wickets in hand. 89 runs on the board. And where is this game heading? What are your thoughts about it? जी हाँ, अगर देखा जाए 89 for the loss of 3 crucial wickets after the completion of 9.22 overs. और यहाँ से डेफिनेटली अगर एक और विकेट मिल जाती है तो ये मुकाबला जो है तराजू में बैठने वाला है, क्योंकि 4 विकेटें आप अगर यहाँ से ले पाते हैं तो वो 79 रन जो बनाने हैं अभी भी 64 गेंदों में आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ज़रूरी रन रेट थोड़ा सा ऊपर दिखता हुआ, जो रेखा अभी तक वो नीचे दिख रही थी वो थोड़ी सी ऊपर दिखती हुई 8.34 प्रति ओवर यहाँ से बनाने होंगे। अगर यहाँ से एक और विकेट मिल जाती है तो दबाव जो है बल्लेबाजी यूनिट पे साफ दिखेगा और आसान रहने वाला होगा नहीं, क्योंकि 50-50 का मुकाबला निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डगआउट से बल्लेबाज नमूदार हुए हैं, और आजिम रथर की ये बड़ी कामयाबी, एक अच्छा मूव कह सकते हैं हम नदीम डार के द्वारा। और दूसरी ही गेंद पे ये बड़ा विकेट, ये बड़ी साझेदारी। और आसिफ खान नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए हैं और आजिम रथर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उमर निसार की बात करें, 18 गेंदे 26 रन इनका निजी स्कोर, और टीम का कुल स्कोर 89 फॉर द लॉस ऑफ 3 क्रूशियल विकेट्स। आजिम रथर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनका सामना करने के लिए आसिफ खान बिल्कुल पहली गेंद का सामना करेंगे और पारी का 10वां ओवर प्रगति पे। ये बढ़िया गेंद, वो टिप्पा खाने के बाद वो ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है इस गेंद में, वो नीचे रहती है गेंद इनकी अगर देखा जाए आसिफ खान की। और जिस तरीके से इरशाद भाई से हमारी चर्चा हुई थी पहली इनिंग्स में, बतौर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आप धीमी गति की गेंदें इस विकेट पे करोगे तो आपकी जो गेंद है उसमें घुमाव भी देखने को मिलेगा और जो बड़े स्ट्रोक है वो शायद ही आपके विरुद्ध दिखेंगे। और वही देखने को मिला है, एक बड़ी कामयाबी आजिम रथर के नाम अब तक 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 89 फॉर द लॉस ऑफ 3 क्रूशियल विकेट्स। वापस यहाँ पे गेम में वापस लौटी है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, इसमें कोई दो राय नहीं है। 89 पे तीसरी विकेट, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, गेंद को ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। हालांकि पीछे प्रोटेक्शन आतिफ गुलजार के रूप में 1 रन आसानी से पूरा किया बल्लेबाजों ने। और आजिम रथर का ओवर काफी क्रूशियल रहने वाला है, इनका पूरा स्पेल ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि ये इनके पास गति भी है, इनके पास वो मिश्रण रहता है गेंदबाजी में, फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं
और बल्लेबाजों के दिमाग को ना जैसे पढ़ लेते हैं। इस बार फ्लाइटेड ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, हल्का सा पुश किया गेंद को कवर की ओर, तेजी से रन भागने की कोशिश और कामयाबी मिली इस आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ। ओवर की समाप्ति 4 सिंगल्स, एक बेहतरीन ओवर आसिम रथर की, एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। आधा सत्र समाप्त हुआ 10 ओवर में 92, 3 विकेटों के नुकसान पर। उमर निसार पे बहुत सारी नजरें और कमेंट्स में भी लोग यही जरूर लिख रहे होंगे कि जब तक उमर है तब तक उमर बढ़ेगी एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 27 रन और अगर आसिफ की बात करें वो 2 पे नाबाद। बैटिंग में मुनीब मुनाफ पे मेरी नजरें रहेंगी, वो अभी आने बाकी हैं। वो बड़ा ही तगड़ा क्रूशल रोल जो है उनका रहने वाला इस मुकाबले में। और 10 ओवर 92 पे 3, उमर 27 पर नाबाद, 60 गेंदे 86 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अब 8.60 रन प्रति ओवर। और गेंदबाजी में वो समर हासिल करने के लिए फिर से समर का इस्तेमाल हो सकता है, वो समर जो कि फ्रूट्स को उर्दू में बोला जाता है इरशाद भाई। और क्या फ्रूट्स यहां मिलेंगे? फिलहाल आप जैम पैक्ड देख सकते हैं स्टैंड्स में। और बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन की प्रशंसा बनती है इस धूप से बचने के लिए जो स्टैंड्स में ऊपर वो कैनोपीज लगाई गई है, वो जो शेड के लिए वो इंतजाम किए हैं बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन ने। ये एक कमेंडेबल जॉब है और ये एक, हालांकि मुझे लगता है क्या आपको जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें कहीं और मिलेंगी। और लश ग्रीन मैदान, और पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं नेटिजन्स की जो रिएक्शंस हैं, लॉर्ड से कंपेयर किया जा रहा है नीलंद्रुस को, और जो वाइब आ रही है यहाँ पे, जो फील आता है। समर इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद को धकेला, पॉइंट से खिलाड़ी आए, एक रन आसानी से मिला, दूसरे के लिए भाग सकते हैं, ओवरथ्रो का एक और रन मिला। और इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 94, 3 विकेटों के नुकसान पर। 84 चाहिए 59 गेंदों में। और ये मुकाबला मेरे ख्याल से तराजू अभी बराबरी पे है। समर का ये 30वां ओवर थोड़े से महंगे, 26 रन 2 ओवर में, एक सफलता जरूर अर्जित की है उन्होंने। इनॉग्रल मुकाबला TCI मैक्स प्रेजेंट्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग सीजन 5। इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद हल्के हाथों से, यहाँ समय ले रहे हैं बल्लेबाज, उस पेशेंस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इस मुकाबले में वो पेशेंस बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। अगर इन दोनों बल्लेबाजों की बात करें, 19 गेंदे 27 रनों पे उमर निसार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आसिफ खान को उनका साथ देना होगा। बैटिंग में डेप्थ जरूर है, लेकिन यहाँ मैच कब आपके हाथ से फिसल जाएगा, निकल जाएगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार लॉफ्ट करने की कोशिश, ऑन साइड में एक बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के काफी दूर से गुजरती हुई, उनके रेडार से थोड़ी दूर जाती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त घुमाव देखने को मिला ऑफ स्टंप से बाहर। और यहां एक चांस बन सकता था, विकेट कीपर क्या थोड़ा लेट हुए वहां। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पे, फिर से हल्का सा पुश, रन की संभावना, 1 रन मिलेगा। आसिम बशीर पे अभी भी वो जरूर टिप्पणी हो रही होगी कि वो कब गेंदबाजी में आएंगे। 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 10.4 के बाद 11वां ओवर प्रगति पे। 56 गेंदों में अभी भी 82 रन चाहिए। 178 का लक्ष्य आसान नहीं रहता है नीलंद्रुस क्रिकेट स्टेडियम बिजबिहारा में। स्टार्ट आपको बहुत अच्छा मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक ब्लिस्ट्रिक जो स्टार्ट माना जाता है अहमद उमर बांडे ने दिया था आपको। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, समय नहीं बल्लेबाज के पास घूमना या वो घूम कर खेलने का, वो हाथ चलाने का, बल्ला चलाने का। सम्मान दिया गेंद को, गेंदबाज की तरफ धकेला, रन की कोई संभावना नहीं। और 11वां ओवर भी काफी अच्छा जाता हुआ यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। 5 गेंदों में मात्र 4 रन। समर बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली। पहले 2 थोड़े महंगे, आखिरी बार इस ओवर में ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार भी गेंद को धकेला है वहां स्वीपर कवर क्षेत्र में, जब तक नदीम भट्ट रोकते। 1 रन और मिला 11 के बाद। 97 पे 3, 54 गेंदे 81 रन। मैच का रोमांच बढ़ रहा है इरशाद भाई। 9 runs and over the required rate. And as soon as the wickets fell, that scoring rate went down drastically. Now they're finding themselves in a situation where they have to score at 9 runs and over. It's not a problem as soon as they play sensibly. Sensible cricket is the need of the hour. Omar Nisar has got a start, 28 of 21. Asif Khan probably has been sent as a pinch hitter to score briskly. And Azim Rathar picking up a wicket, but there was a bad shot from Awais Shah.
The matchup was in his favor, but since he was trying to go down the ground half-heartedly, had he gone with a full flow of that bat, that would have sailed over the fielder's head for a 6. Since he was trying to chip it, the first ball, using the pace, finds the fielder on the offside. Dot ball to start over number 12. Current run rate is 18.82. Next ball comes out of his crease. Inside out, beautifully hit. Has that got the distance? No. It has gone straight into the hands of the fielder. And it's Aqib Gulzar with the catch. Samar has got the second wicket. And Umar Nisar has to walk back. 28 of 21. The start was there, but he has thrown it away. Beautifully bowled, drawn him forward. Was trying to go inside out. And Azim Rathar, it's not Samar, it's Azim Rathar who picks up his second wicket. We've got issues with the scoreboard here. But for sure, it was Azim Rathar picking up the second wicket. Umar Nisar, 28 of 21. He promised a lot. Another start has been thrown away by the batters of Elegant Strikers Srinagar. Look at that, bowling it away from his arc, and it's got him out of the crease. That's why he was not able to get the distance. Asif Khan is at the non-striker's end, so the game changes once again. 81 from 52 with a wicket, an untimely wicket for Elegant Strikers, but a timely one for Azim Rathar and his team Sultan Warriors Baramulla. Saqib is the new man in, the under-19 player for Elegant Strikers. And in the batters to come, we have Munib Munaf, who can play a big knock on a given day as well. But then that one kept low terribly. The batsman was trying to punch it off the back foot. Azim Rathar has truly changed the complexion of this game within a matter of 1.5 overs. Once again, that one. Look at that one. Skidding away from the right-hander. This time he strokes it down the ground. Batsman should look to come back for 2. Easy runs there for Saqib, who gets off the mark with that single and now brings Asif Khan back on strike. Azim Rathar is proving out to be very hard to score off. Another single. Runs coming in the form of singles. The boundaries have dried out. The wickets have been gotten in clumps. And that has been the story of this turnaround. One more ball to come in the 12th. What a spell this is turning out to be. Saqib knocks it. Hesitant to go for a run. Chance of a run out. But the batters survive. Over comes to a close. 12 done. 99 for 4. And the asking rate has gone to 9.67 runs in over. But the current being 8.25, they need 79 from 48. Would you believe it? They were 45 in the first 3 overs, 60 in the power play, and now they are struggling for every run from here. And what's the reason? The continuous falling of the wickets after Ahmed Bande, and then all the other players, they lost wickets on trot, and right now they are at a very bad position. They need someone from here who can take their boat towards the shore. They need 79 from here in the remaining 48 deliveries. Good shot, this one straight to the fielder. A chance for a single. Saqib and Umar Nisar. Umar Nisar is set on crease.
He has faced 23 deliveries so far, scored 30 runs. He has got a responsibility on his shoulders. He has to play something extraordinary from here to get his team over the line. Whereas Summer, he has bowled beautifully. Somehow not that much economical, but he has a wicket in his hand. With his 4th over, Summer driven this one to the covers. They will have to settle only for a single again. Strike rotation is very, very important. The required run rate is 10.04, but you will get the odd boundaries in between. You have to keep wickets in hand, run those singles and doubles. Sometimes you will get the odd boundaries as well. 77 runs, 46 balls. This is the equation. 101 runs on the board for the loss of 4 wickets. And they badly need to keep this wicket in hand. Umar Nisar and Saqib. That's a terrific shot. But there's a fielder there. They will again only a single, 3 singles in a row. 102 for the loss of 4 wickets. Saqib, the under-19 sensation of elegant striker Srinagar. He has to do something big with the bat. He has to prove his mettle at this big stage. Saqib. Good delivery this one. He leaves this one. He thought it might be a wide, but it was well inside of that crease. Summer only conceding 3 runs in this over. 2 more to go. The required run rate is just going up. It's 10.36 at this point of time. They need to decrease it as soon as possible. Tries to hit big, but this time it's a wide. It's a wide signal from the umpire. And the bowler Summer looks very disappointed by this call from the umpire. He's having a chat. 103 runs on the board for the loss of 4 wickets. 2 more deliveries in this over. Saqib. He wants to play that big shot. That's a good delivery. This one capped low. And Saqib, he's looking in some sort of earliness. He should take his time. The required run rate is 10.47. You have to keep the watch. You have to keep an eye on the ball. Then you can go for the big shots. On the pads, huge appeal. Turned down by... Oh, he has given him out. This is the 5th wicket down for elegant strikers. And Sultan Warriors Baramulla, they are at the top of their game right now. Summer getting another wicket on the last ball of his spell. At first I thought maybe the umpire will just stay with the not out decision, but it looks plumb in front, definitely. He's gone. Sultan Warriors Baramulla, they are back in this game. समर ने दिला दी है एक और विकेट. अपनी आखिरी गेंद पर, अपने कोटे की आखिरी गेंद पर अक्रॉस द लाइन जाने की कोशिश की थी वहां साकिब ने, और गेंद उनके पैड पे लगती हुई अंपायर ने स्वीकारा उस अपील को, और समर को मिली एक और सफलता. सुल्तान वॉरियर्स को मिली एक और सफलता. 5वां झटका लगता हुआ स्टंप्स के सामने आए थे. काफी समय लिया वहां अंपायर ने डिसीजन देने में, और 13वें ओवर की समाप्ति 103 पे 5. अब थोड़ी सी फस्ती दिखाई दे रही है एलिगेंट स्ट्राइकर्स. दर्शक दीर्घा पूरा हाउसफुल हुआ है आज नीलंद्रुस का मैदान. 75 रन 42 गेंदों में. इक्वेशन अब थोड़ा सा वो टफ होता हुआ, काफी मुश्किल होता हुआ यहां एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए. लगभग 11 रन प्रति ओवर चाहिए अब. 42 गेंदे, 75 रन, और दर्शकों की एक बड़ी संख्या और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट उनके लिए, जो इंतजामात बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन ने लोगों के मनोरंजन के लिए. और ऐसे में अब मुनीब मुनाफ मैदान के अंदर आए हैं. 103 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, 42 गेंदे, 75 रन. आजिम रथर वापस गेंदबाजी में. उनके 4 ओवर लगातार चलने वाले हैं. 2 ओवर 6 रन 2 विकेटें, और उन्होंने वापसी जो करवा दी है यहां सुल्तान वॉरियर्स की, और मुकाबले में वापसी की है सुल्तान ने. जब शुरुआत काफी खराब मिली थी, जब शुरुआत में अहमद उमर बांडे ने उनके खिलाफ काफी हल्ला मचाया था बल्लेबाजी से, 48 रन बनाकर आउट जरूर हुए. उमर निसार भी
लगभग उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। 31 पर नाबाद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट करने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी को बीट कर नहीं पाए। पॉइंट पर रन बनाने की संभावनाएं समाप्त होती हुई। टीसीआई मैक्स प्रेजेंट्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग, और कल इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला कल यानी कि इतवार 3 अगस्त दिन के 11 बजे से, और स्काई स्टार्स बड़गाम भिड़ने वाला है JK11 शुपया के विरुद्ध। और यहां विकेट मिली है, उमर निसार जाएंगे वापस, और आजिम रथर को मिलती हुई एक और सफलता। उमर निसार वापस गए हैं, और रिप्लेस में आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार खेलते ही उनको पता था कि यहां उनकी टिकट कटने वाली है, और पॉइंट पर जोलो ने कोई गलती नहीं की, मिस हिट। और वहां फील्डर ने कहा कि ये तोहफा तो हम स्वीकारेंगे, ऐसे तोहफे हम वापस करते नहीं। यहां मिल चुकी है एक बड़ी विकेट उमर निसार के रूप में। 31 बनाकर वो वापस गए 25 गेंदों में। 103 पे गिरी छठी विकेट। एलिगेंट स्ट्राइकर्स एक ऐसे मुकाबले से दूर जा रहे हैं जिस मुकाबले में उनको एक बेहतरीन शुरुआत मिली थी बल्लेबाजी में। 103 रन 6 विकेटों के नुकसान पर वापसी करने की कोशिश। मुनीब मुनाफ अभी भी नाबाद हैं, हालांकि अभी कोई गेंद खेली नहीं, लेकिन उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे होगी, और बहुत उम्मीदें हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स को अपने सबसे अहम बल्लेबाज जो कि अब बचे हुए हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए। नए बल्लेबाज वैभव माली यहां आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। बिजबिहारा प्रीमियर लीग सीजन 5 और पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला ये इस लीग का। एलिगेंट स्ट्राइकर्स चेज कर रहे हैं 178 का लक्ष्य, और यहां लड़खड़ाती हुई पारी। 103 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 40 गेंदों में 75, और वो रिक्वायर्ड रन रेट अब काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब आपके हाथ में मात्र 4 विकेटें हैं। एक पार्टनरशिप अभी भी मुकाबले में वापस ला सकते हैं एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर को, लेकिन पार्टनरशिप बहुत मुश्किल होगी अब इरशाद भाई। Absolutely. You have to do 2 jobs to save your wicket along with score runs briskly. 75 from 40. That was a very close shout against Weba Mali, and Azim Rathar has been the chief destructor of this innings. 3 for 6 so far. This one was going down the leg side for sure. Azim Rathar has been miserly apart from taking the wickets. Another dot ball. And these two batters will take some time to settle in, because we have seen it is not easy for the new batsman to come and score runs briskly from the get-go. That was another good delivery. Another dot ball. This is turning out to be a terrific over so far. A wicket maiden if this ball goes without any run. Waibao Mali. He has faced 3 balls, no run. The big shot is coming. Steps away, misses the line of the ball completely. It's a wicket maiden. It's a terrific over. 3 for 6 from 3. And this has been one heck of a spell so far from Azim Rathar. At one stage, they were going great, guns blazing. They're taking this attack. They were tearing them apart. But then wickets from Azim Rathar. He is the trump card, and the trump card was used at the right stage, and now he's turning out to be a headache for elegant strikers. Vaibhav Mali and Munib Munaf. They have to bat out of their skins to make a match out of this. Required rate of 12.60. It's completely reversed. At one stage, they were going at 13 runs and over. Required rate was 8. Now, the run rate at the stage is 7.36, and the asking run rate is 12.50. Could you believe it? This is the game of cricket. Cricket, a great leveler. Uncertainties prevailing every now and then, unless the last ball is bowled. Here is Nadeem Dar. Good delivery, good fielding in his follow-through. That is leading from the front by the skipper.
He came in, he picked up a wicket. He started the route. And the route of falling wickets is continuing. Next ball turned away. Down towards deep backward square leg. The batsman will pick up a single. So ones and twos aren't going to matter. Ones and twos aren't going to bother a lot to the bowlers and the skipper of Sultan Warriors Baramulla. Boundaries and sixes is the need of the hour. Once again, wrapped on the pad, straight forward. The finger goes up. Wicket number 7. And elegant strikers are falling apart. That was a straight delivery. The batsman was shuffling across, trying to nudge it away onto the onside. And pinned in front, Nadeem Dar gets 2. Munib Munaf might have bowled an exceptional spell, taking 3 wickets, but now with a bat in hands, look at that. That was always going to be out. Hitting the back leg, playing from the back foot, and playing from the back foot against Nadeem Dar when he's bowling stump to stump is always going to be curtains. That is another wicket. 7 wickets, and now Sultan Warriors Baramulla, they are on top. When Ahmed Bande was batting, it looked like a one-man show, and it looked like a one-sided contest. But then, once he got out, the procession of wickets continued. And now they're 7 down. They need 74 from 33. Nazir Tiger arrives. Nazir Ahmed is a well-built, muscular all-rounder. He might have bowled only 1 over in which he gave away 15. But now is the time for him to show that he is capable of doing this. 13.45 is the required run rate. It's getting out of equation for elegant strikers. And Sultan Warriors Baramulla, it's a win-win situation for them. The 2 umpires are once again together. No chances of a rain. And the breeze is blowing across the ground here at Nilendrus. TCI Max presenting the 5th edition of BPL. As a fan, you can be a part. And you can win a customized BPL cap. All you have to do is to tag 5 of your friends on Facebook, share it to all platforms on social networking, and you can be a contender of a BPL premium customized cap. Top fan moment, and top fan will be announced after the match in the post-match presentation. Right now, the fielders of Sultan Warriors Baramulla sharing a lighter moment. Understandably so, because their team is on top. And this is the game of cricket for you. At one stage, Sultan Warriors Baramulla was struggling to get runs. But then, somehow, due to some brilliance from Zuhur Zolo, they managed to score 177. And then when Ahmed Omar Bande came out to bat, he went berserk right from ball 1. It was turning out to be a one-sided affair when he was there. But then once he got out, wickets fell in clumps. And now they're gasping. They are truly gasping for runs. The boundaries have dried up. The wickets have fell in clumps, and the procession is continuing still. Change of ball, because that ball had got a hammering of its life. Nadeem Dar will be getting a fresh, harder ball, and probably to the reason of that veering out of that ball, going into the deep field, outfield time and again. And since that shower, the ball is getting wet in that outer field. A single has been pinched by Munib Munaf. Nazir Tiger, beg your pardon, 2 more runs.
of that delivery, taking the total to 106 for the loss of 7 wickets. Nadeem Dar to Nazir. Nazir comes behind the line. Is compelled to play forward defensive. It's a dot ball. Final time in his spell, Nadeem Dar. Good delivery once more. Keeps him honest. And keeps him down to only 2. It's a dot ball to finish his spell. What a spell this has been from the captain. 2 for 23 from his 4. Elegant strikers. Required rate. Touching skies. 14.40. They need 72 from 30 with just 3 wickets in the bank. लक्ष्य बहुत मुश्किल अब दिखाई दे रहा है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, और क्या कमाल वापसी कर दी है, और पूरा श्रेय जाता है आजिम रथर को। 3 ओवर में मात्र 6 रन और 3 विकेटें। ये स्पेल काफी समय तक याद रहेगा। बिजबिहारा प्रीमियर लीग के इनॉग्रल मैच में ही, और कुछ मैचेस होते हैं ना ऐसे जिनकी व्यूअरशिप बहुत होती है, जिन पे बहुत सारी नजरें रहती है, और उन मुकाबलों में खास एक मुकाबला बिजबिहारा प्रीमियर लीग का ये इनॉग्रल मैच। और उस मैच में जब आप इस प्रकार के एक स्पेल डालते हैं जहां 3 ओवर में 1 मेडन ओवर डालकर 6 रन खर्चते हैं, 3 सफलताएं आप हासिल कर चुके हैं। फिलहाल 15 ओवर के बाद 106 पे 7 रिक्वायर्ड रन रेट अब काफी मुश्किल हो चुका है। 14.40 रन प्रति ओवर। आजिम रथर अपना आखिरी ओवर डालेंगे। बाएं हाथ से राउंड द स्टंप, सॉफ्ट स्टंप से काफी बाहर गेंद, पूरी तरीके से बीट किया वहां मुनीब मुनाफ को। मुनीब मुनाफ हालांकि उमूमन हमने देखा है शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए आते हैं 3-4 नंबर पे, आज थोड़ा लेट आए। उमर निसार ने एक अच्छी पारी खेली थी, अहमद उमर बांडे ने एक अच्छी पारी खेली थी। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, ड्राइव किया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इस चौके की बहुत आवश्यकता है, इन रनों की बहुत आवश्यकता है, और आजिम रथर के सामने 19 गेंदों के बाद एक बड़ा स्ट्रोक लगा है उनकी गेंदबाजी में। डांसिंग डाउन द ग्राउंड जिसको आप कहते हैं इरशाद भाई, कदमों का इस्तेमाल करके, और जहां गेंद टिप्पा खा रही थी वहीं से उठाया और उस मिड ऑफ के खिलाड़ी को बीट कर दिया वहां डीप में, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ 110, 7 विकेटों के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी में। TCI मैक्स प्रेजेंट्स बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 5th नीलंद्रुस क्रिकेट स्टेडियम बिजबिहारा से ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। इस बार आने दिया गेंद को बल्ले पे, सीधे बल्ले से धकेला गेंदबाज की तरफ, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। 110 पे 7, 27 गेंदों में 68। ये मैच कहां से कहां आ गया, इस मैच ने किस प्रकार की पलट खाई। इस बार भी कदमों का किया इस्तेमाल और सॉफ्ट डिसमिसल, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कप्तान थे वहां और एक आसान सा कैच लपके हैं नदीम डार, और इस तरीके से आजिम रथर को मिली एक और सफलता। और मुनीब मुनाफ के रूप में जो आखिरी उम्मीद थी एलिगेंट स्ट्राइकर्स के पास, वो उम्मीद अब समाप्त हुई है। 8वां झटका लगा एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, और एक संकेत बाकी टीमों के लिए कि इस विकेट पे 170 का टारगेट बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं यहां से 170 का टारगेट शायद एलिगेंट स्ट्राइकर्स को लगा होगा पावर प्ले के अंदर हम आसानी से चेज कर लेंगे, लेकिन उस समय पे परिस्थितियां अलग थी। वो अहमद उमर बांडे थे जिन्होंने कुछ आतिशबाजी दिखाई थी शुरुआत से ही, लेकिन यहां उसके बाद बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं। उमर निसार को छोड़ के बाकी बल्लेबाज वो उमर छोटी करते गए एलिगेंट स्ट्राइकर्स की पारी की, और 110 पे गिरी 8वीं विकेट। 26 गेंदों में 68 चाहिए 16वां ओवर। प्रगति पे आजिम बन गए हीरो आज इस मुकाबले के। 4 सफलताएं, खर्चे हैं मात्र 10 रन, और एलिगेंट स्ट्राइकर्स का वो खीमा पूरा परेशान और बेबसी की हालत में। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पिछले साल इनॉग्रल मुकाबला हारे थे हिलव्यू रजौरी के विरुद्ध। क्या इस साल वो बाजी मारेंगे 5वें एडिशन के इनॉग्रल मुकाबले में? यहां से तो वही लग रहा है कि ये मुकाबला सुल्तान का बन चुका है, और सुल्तान की सल्तनत पहले मैच में देखने को मिली। इस बार ड्राइव किया गेंद को नासिर रसूल ने, गेंद दूर उस दिशा में जा रही है, आतिफ गुलजार जब तक रोकते,
बल्लेबाज दौड़कर दूसरे रन के लिए पलटे और पलटकर दूसरा रन भी पूरा हुआ इन 2 रनों के साथ। 112, 8 विकेटों के नुकसान पर 15.5 के बाद 25 गेंदें और रन चाहिए 66। बहुत मुश्किल है इरशाद भाई, और कहीं ना कहीं अगर वो अहमद उमर बांडे की विकेट अगर हम उस पर नजर दौड़ाएंगे तो वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि उसके बाद हमें दिखाई नहीं कहीं पर वो इंटेंट बल्लेबाजों का। इस बार हल्के हाथों से खेलकर सिंगल जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 15.5, हालांकि 16वें ओवर की समाप्ति 113 पे 8 और जीतने के लिए अभी भी 65 रन चाहिए 24 गेंदों में, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। 65 runs required in the remaining 24 balls. This is going to be very, very difficult. And you don't have those proper batsmen on the crease. It's Nazir and Nasir Rasool. However, Nazir can play some big shots. But on the other hand, you have only those tail-enders batting at the other end. So it's not going to be an easy one to chase. And if we talk about Azim Brother, 4 overs, only conceded 13 runs and 4 wickets. If Sultan Warriors Baramulla wins the game, which looks so, then definitely Azim Rathar is going to be the man of the match for them for this outstanding spell. It's Nadeem Butt who is rolling his arms. He's back into the attack from the media center end. Nadeem to Nasir Rasool, and they have only one option from here, that's to go big on from here. They have to play those big shots because the required run rate, it's touching 17, it's 16.25. It's do or die situation from here. It's now or never. Nasir Rasool on strike. Nadeem to Nasir. This is the 17th over. He wants to loft it over the covers but misses the line of the ball completely. A dot ball to start the over number 18. 17 to be precise. 65 are required in 23 deliveries. But what a bowling effort from Azim Rathar. They changed the perception, they changed the complexion of the game. 2 dot balls in a row. It's never going to be easy to hit Nadeem Butt at this point of time. Nadeem Butt is a very, very clever bowler. He knows how to bowl in the death. And that's what he is good at. Nadeem to Nasir. That's on the pads. Another dot ball. Make it 3 in a row. This is the worst situation for elegant striker Srinagar. They started at a very good note. In the power play, they were 60 for only 1 wicket. But look at their scorecard now. They have lost wickets consecutively. That's over the umpire's head. Will they get a double? No, they will have to settle only for a single only. With this, the score moves to 114 and the required run rate, look at it, it's 19.20. It's looking very, very difficult from here, and keeping the dimensions of the ground in mind, it's never going to be an easy chase from here. Nazir on strike. Plays it on back foot through the covers. They are rushing back for the second. Can they get it? Yes. There's a run out appeal. But I think he is safe in his home. Nadeem Butt, very economical the way he have bowled. And look at it. They were rushing back for the second. A good effort there. Oh, terrific, terrific by the wicket keeper. That's, we call it Dhoni style. Only 4 runs from the 17th over. 117 for the loss of 8 wickets. And this game from here is looking nearly impossible for elegant strikers to chase with only 2 wickets in hand. They require 61 in 18 balls. It means they have to go at 20 runs per over from here. At least 2 sixes in per over. That's what they will want from here, which is going to be very, very difficult. Clearing those big boundaries, big dimensions is heck of a task. Atif Gulzar.
the under-19 sensation of Sultan Warriors Baramulla. He has been assigned with the task now. Come little boy and enjoy the death bowling here. It's the 18th over that he is going to bowl. Atif Gulzar. He has got some serious pace. A very talented lad, Atif Gulzar. We have seen him quite a couple of times. And he has got the ball in his hand. From the far end, it will be Atif Gulzar now who is going to bowl now. 20 runs per over. That is the equation. Nazir Tiger on strike. He has scored 5 runs on the 5 balls run a ball. And Nasir Rasool 4 on 6 balls. Never going to be easy on this track. Atif with his first over of his quota. The under-19 sensation of Sultan Warriors Baramulla. Atif, serious talent, serious pace. Let's see who will prevail in this battle now. He comes down the track. Outside edge maybe, or the ball is just deflected there. It has gone over the fence for a boundary. Some more drama, some more thriller left in the game. Came down the track and they got a boundary on the very important occasion. Look at it. But he has got some serious pace. Wasim diving on his right, tried very hard to stop this one, but was unable. That's hard struck. There's a fielder. He will stop it near the boundary corner till the time they will get the easy 2. 6 runs on 2 balls. They still need 14 in this over, at least 14 in this over. जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें 17.2 ओवर की गेंदबाजी, 123 8 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। नजीर टाइगर लगातार एक छोर से वो बड़े स्ट्रोकों की तलाश में, और यहाँ पे बल्लेबाज भी चूक गए और विकेट कीपर भी, और बाई के रूप में शायद यहाँ पे रन्स मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इशारा मिलता हुआ बाई के रूप में ये रन जोड़ दीजिए एलिगेंट स्ट्राइकर्स के खाते में। 124 8 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अभी भी जीत के लिए 54 बहुमूल्य रन, 15 गेंदें शेष। आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की अभी रन गति से रन्स बनाने हैं, 21.60 और केवल 2 विकेट से आपके हाथ में, उतना आसान रहने वाला है नहीं। आतिफ गुलजार पारी का पहला ओवर लेकर और अब तक 3 गेंदें कर चुके हैं और 6 रन उनके खाते में। यहां बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर बल्ला चलाया था, लेकिन वहां डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन, क्षमा कीजिएगा, लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी है वहां तैनात है, और यहां बड़े स्ट्रोक्स तलाशना बिल्कुल वो मौत के कुएं में गिरना, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति थी और जिस प्रकार की स्थिति इस समय है, आजिम रथिर के वो 4 गेम चेंजिंग वर्ड्स लगातार याद करेंगे। और यहां पे क्या खूबसूरत स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल वहां पे सम्मान दिया, आने दिया गेंद को, और सही समय के साथ वो टाइमिंग के सहारे ताकत के साथ नजाकत का भी इस्तेमाल किया यहां बल्लेबाज नजीर टाइगर ने, और गेंद घास के कालीन को चीरती हुई 4 रनों के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रोक्स लगाने की दरकार है यहां पे, और ये जो लम्हे हैं हमेशा याद करेंगे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की, कहां हमसे गलती हुई। जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी 4 ओवर सर्कल्स के, और वहां पे अच्छे खासे रन बटोरे थे, फिर लगातार विकेट्स आते गए, और यहां पे प्रेशर साफ दर्शाता हुआ बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर। एक और वाइड का इशारा मिला है। आतिफ गुलजार थोड़े से प्रेशर में हैं, क्योंकि पहला ओवर है, 12 रन अब तक खर्चे हैं इस ओवर से, और अभी भी जीत के लिए 22.15 प्रति ओवर बनाने होंगे। और यहां से मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर इरशाद भाई से जानना चाहूंगा कि नजीर टाइगर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो बड़े स्ट्रोक्स तलाशे, और यहां से जो स्थिति है किस प्रकार की है। Well, this game is heading only one way. That is Sultan Warriors Baramulla. 48 from 12. Well, this is going to be improbable from now onwards. Nasir Rasool and Nazir Tiger, they tried a lot to get themselves going, but the bowling has been decent. The fielders have backed their bowlers, and this has been a complete turnaround of events.
Nelandrus Cricket Stadium. It's picturesque. It's brilliant. The facilities here are outstanding this year. Crowd in numbers. An absolute swarm of people here at Nelandrus Cricket Stadium, witnessing the inaugural game of BPL 5 presented by TCI Max. Nadeem Butt, 2 overs, none for 19. Should look to pick up a wicket here to better those bowling figures. He was taken for runs in his first over when Ahmed Omar Bande was batting. And this is what happens. Chance of a stumping. And it has been referred upstairs by umpire Javed Daryal. The wicketkeeper behind the stumps was quick to whip the bails off, as Nasir Rasool was trying to go down the ground. Here he was trying to go down the ground. He looked short of his ground. But we would definitely like to have another look. There the ball has been, the batsman is dragging himself out. And there the ball has been collected cleanly. And the wickets are broken. He is well short of his ground. So this is wicket number 9. That is outstanding from the wicketkeeper Wasim Kachru. Whipping the bails off in a flash. And Nadeem Butt finally picks up a wicket. Now he's got a chance to pick up another. Nasir Rasool has to walk back. So it's 9 down for 130. 48 from 11. If every ball has to go for a boundary or a 6. .48 from 11. It's never gonna be easy, and the batsman who has made his way out in the middle is Imtiaz Ahmed. He was expensive in his spell of 4 overs. Now he's got an improbable job at his hand. 1-3-0 for the loss of 9. And Sultan Warriors Baramulla. The spinners have almost won it for them. Next ball, punches it up the back foot. Finds the space, beats the fielder. Azam Rathur, who has been the chief destroyer in this innings, picking up 4 wickets for just 16 of his 4. Throws the ball in, the batsman pick up 1. Now they need 47 from the remaining deliveries. And the remaining deliveries are 10. Here is Nadeem Butt to Nazir Tiger. And Nazir Tiger swings it away onto the onside. Won't be more than a single, as this innings is closing out, and is closing out in favor of Sultan Warriors. It will be a very good start to the tournament from them, and it will be a dejected start for Elegant Strikers Srinagar. Nadeem Butt. Can he pick up one more? He goes down the ground, in the air, straight to the fielder. It's Asim Bashir with the catch. Nadeem Butt picks his second. And it's all over for Elegant Strikers Srinagar. Lost this game by a margin of 46 runs. And Nadeem Butt, slower delivery. He was trying to go down the ground. There was a man back, Asim Bashir. He might not have bowled today, but he has ensured that the innings of Elegant Strikers is cut short by 45. Sultan Warriors Baramulla won by 45 runs. Congratulations to Sultan Warriors Baramulla for a dream start in this tournament. And giving you the summary of the match, Sultan Warriors Baramulla won the toss, batted first, scored 177. And when Elegant Strikers came out to bat, it was Ahmed Omar Bande who scored 48 of just 14.
But when he lost his wicket, it was a procession of wickets. Azim Rathar picking up 4 for, ably supported by the other bowlers. Nadeem Dar picking up a 2 for, and Nadeem Butt in the end wiping the tail with a 2-wicket haul as well. Sultan Warriors Baramulla in the end won by 45 runs to kickstart their tournament, and tomorrow will be match number 2. Sky Stars Badgam will be up against JK11 Shupian. We will catch you up at 11 o'clock in the morning. We will be live with the post-match presentation in a short while from now. Thank you for joining State Sports Live and the official Facebook page and YouTube channels of Bijbihara Premier League. Have a nice time ahead and catch with us tomorrow at 11 a.m. sharp with Sky Stars and JK11.